जून में चलेगी। वो आ रहे हैं फिर तो लूज करेंगे। एरिया लगता अभी अपडेट नहीं हुआ। चाइना कह रहा हॉलीवुड की फिल्में बंद कर देगा ऐसे। हाँ, वो कह रहा है कि मैं भी अभी टैरिफ नहीं लाऊंगा, कम नहीं करूँ। तो कल देखा वो जो क्रॉप पे लगा रहा है उससे तेरे Sorry? चाइना That every day is a absolutely. नहीं, गिवन करना पड़ेगा। कौन यहाँ पर जॉबिंग करेगा $3 पे? या जंग बना दे, क्या जंग चला देंगे उनके पास। चौधरी है, जो मर्जी करें, तो यहाँ ऑन करते हैं। चौधरी को परवाह नहीं होती। ले आए ना मार्केट वापस 2-3 दिन में सब कुछ। सर हम तो सिर्फ रोज आ जाते हैं अपनी दिहाड़ी लेने। किधर जा रही है? चलो इधर जा रही है। So another 15 minutes the areas will be updated because of yesterday's spike. This one function is it's not normal. That's a fake news spike, and for the last So everything was fake yesterday. yeah, that one spike was fake. That 10-minute spike was fake. Somebody posted on Twitter that, hey, so the computer is trying to adjust. Do I ignore this or not? Right? Because that's not a real fake. However, everything climbed back up, right? So to the extreme point. So right now, the only issue is it'll get updated shortly. ये अच्छी सपोर्ट बनी थी इनकी लगता है वैसे ही। तो देख ही नहीं रहा इस वक्त, क्योंकि देखते हैं अगले एरियाज क्या निकलते हैं। It's still a roller coaster in my opinion. There's no phone pickup in the morning. But maybe the bottom run is over. Maybe. Question is. It seemed like a good support from the last.
देखें यार कितनी गिर सकती है, क्वेश्चन यही है ना. Yes. Seven. I think it's above yesterday's extreme high, so good morning, Ji. All right, I think your areas are updated. You guys can log in. 17, 16, 640. Let me disconnect my connections and then. So right now we are now in R1 and R2 area. So let's see. Same R1, R2 area. Okay, areas are updated. So let's take a look at what do we want to do today. Big volatility. Still, it's not. Still has some energy. How are you gonna trade? Exactly. So, all right, we'll analyze it anyway. Any forex factory? Nothing. Okay, good morning, everybody. Tuesday, April 8th, 9 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you guys are joining us at superareas.com. Quickly take a look at Forex Factory. No major news except the tariff for President Trump is going to speak at 6:45 p.m. Let's see.
Yesterday, rumor was a crazy roller coaster ride, and we had quite a bit of fun watching it. Did not put any trade in. So last night high has been 18,082. Last night low has been 17,644. So you are 438 point swing. Where's the price right now? 18,000. So very close to our night session high and R2. So we are close to R2. So at the moment, we are close to R2 right now. Price has touched the R2 on, so Nasdaq expected high, extreme high. These two values, guys. So we will look at expected high, extreme high for Nasdaq. And ES, the values, again, we are looking at expected high, extreme high. Because right now it's above R2. So price is opening as at above R2. We are looking at expected high and extreme high as our. So we still got 50 points before we see a bit of a retrace. It is crazy at the moment. All right, so price touched over R2 and yeah, it's in R2 for both markets. 39, if I take. Good morning, Jim. So from here to expected high, we got almost 200 points. So 220. So for Nasdaq, so we will worry around 18,320 to 400, which way Nasdaq goes. And ES, we got a bit of a, both looks synced at the moment. So 5,300 is the number we will look for.
value area आ गया Value area for ES is 60 minutes. It's 60 minutes per दिख नहीं रहा. No, because of this spike yesterday, this is invalid. So there's not really a value area of yesterday's volume because computer is smart enough to say, hey, none of this was real. So what am I waiting for? Expected high for area. So area, I will take a trade at expected high, both Nasdaq and ES. Still quite a bit of a volatility, moving way too fast. I think it could go today to extreme high. First, it has to touch to. पहले तो हाँ देखे ना, because 60-minute upward band is sitting there. Your Fibonacci sitting in 60 minutes. So I think we have a lowest. And if you want to buy, expected low, of course. So low to go high and high to go low. Of course, area trade. But so good number to buy would be, sell Nasdaq would be 18,350. Sell. 18,350 is the number because yesterday's spike, it went to 358. So 350 jo hai na. So, and you have yesterday's high there. So Nasdaq expected high and ES expected high if you're doing area trade. Good mind. This was a good breakout trade, good mid band, but too fast. नहीं कहाँ से एंटर करें सर, वो पहले हायर हाई से मिड बैंड बैकअप. So we'll sit, we'll wait, we'll observe, and we'll see how things kind of go, which way. Because still I don't have a, on a 60-minute chart, I don't have a higher low.
On 240 chart, I don't have a higher low. So we have a previous lower high, but so around expected low, it should put us in higher low. On 60-minute chart, अगर आज expected low आ गई, तो blue color आ जाएगा higher low. Meaning, what's the lowest low for? So what I'm trying to say quickly while this is being built is market is crashing all the way down, and we have a number 4820 is the number for ES, right? We have that. So it is going up, yes, but first it hasn't. So we have a lower high number as well. So that lower high number is what? 5286. 5286. Right now it's climbing up. So if it breaks this, we will see how. So I need a lower high somewhere around here to make sure I will go up in a long-term position. So that's how, right now this is my swing. Right now we are in a retrace. Lower high, lower low to lower high. So let me redraw this on a 60-minute. You have a swing, retrace. We don't have a lower high. Right now, still in a retrace. So both have gone above R2. Don't have a value area because of the fake news yesterday. Let me refresh these. Reload. Reload. So another 7 minutes to go. So this is becoming our night session high, by the way, because this is your current value. No, I'm not in any. नहीं वो एक कल तक ये डैशबोर्ड तो गार्बेज है इनका, वो सिर्फ ट्रेडो वेट पे देखें एक होना चाहिए, एक आ रहा है बस यही है आपका जो जिसके आगे मास्टर होगा, नहीं वो आपके डैशबोर्ड पे एक नाम आएगा ना मास्टर अकाउंट का नंबर, हाँ लेकिन ये वही नंबर है, ये 25,000 से स्टार्ट हो रहा है ना, फिर यही होगा, ये कल वाला है तो अभी वो नया नहीं आया इसका. Normally we'll say the word master,
and it will cancel your previous. और निंजा के अंदर जो है इन बजट्स के अंदर Mhm. ये तो दोनों अपने दिखा लगा ये Yeah, that's fine. वो भी दोनों disconnect हो जाएंगे. Yep. So moment trade of it gets updated with a new thing. it will- so you just like right now just waiting there Yes, yes, yes. और अब सेंड पे करते रहोगे करना एक्सपेक्टेड है सर एक्सपेक्टेड हाई पे मैं खामोशी से बैठा हूँ, उससे पहले नहीं, ना नैस्डैक ना ईएस. 18350 का नंबर लूंगा मैं, क्योंकि पिछला कल का हाई था 358, तो आई एम टेकिंग 350 टुडे. आप क्या नंबर लेके बैठे नैस्डैक में लूं हैं, ईएस में मिलूंगा अराउंड 5300 पूरा, बिकॉज फिबोनाची का रेड बॉक्स ब्लू उधर है 60 मिनट्स. So the numbers to watch out for is expected high 350. अब वो 320 से चली जाए, कोई किस्मत का पता नहीं. Excuse me. So 4 more minutes to go and the craziness will start again. So the night session high now is the 272 version. $275. So this will become overnight session high. 270. Yep.
And at the bottom of the bar, but too fast. All right, third, we are officially open. I covered it again. 9:34. So everything is showing green. Anybody about NVIDIA is doing good, back to 105. RSI would be Thirty 20 first SRES came in. Good morning, G. Let's see if R2 becomes a support here and bounces from here for both. Both are pretty much synced. Both Nasdaq and ES are synced right now.
Back in R2, one more time, below R2. हाँ मैं टेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन अभी एक्सपेक्टेड हाई का वेट करो, टेस्ट कर।
Let's see, below R1. Wants to go up, but R1 is pretty, R2 is pretty strong at the moment, like a magnet. Nasdaq, I will go long from at least expected low, 17,280. Around that time, it should make a higher low. So Nasdaq long is 17,280, 260. We'll see. है हाँ क्योंकि आना जी 1 मिनट में गिर सकते नहीं नहीं 1000 का फर्क है हाँ 200 no. आज कोई न्यूज़ नहीं so waiting for the price to go at least expected high है हाँ ठीक है सब मैंने तो कोई सिग्नल नहीं भेजा नथिंग क्योंकि आएगा तो
All right, coming soon. Only 100 points left on Nasdaq and हाँ नहीं है जी Nasdaq. My 52.38 is a long term. Micro. नहीं आप सिम वाले हम एक्चुअल में कन्वर्ट करा सकते हैं. ऐसा करें फ्लो बॉट खोलें लीडर को बनाएं सिम तो आपकी फीलिंग चली जाएगी सिम पे पीछे जो बनता रहे तो आपको अगर फीलिंग आती है कि सिम में बनता है तो लीडर सिम बना दे तो पीछे खुद ही वो होता रहेगा काम.
Hotspot. अपने आप ही किसी ने किया है उसमें। तेरी मूवी देखा चलिए मेरी मूवी देखा चलिए अभी जैसे जब तक लेटेस्ट ट्रेड अप्रेंटिस दिखा रहे हैं तो कुछ नहीं होता है ये अब वो बनाएंगे पैसे and it's not the real thing. या तो लग रहा है कि जैसे मेरा उस पे ना दो अकाउंट दिखा रहे हैं ना लेकिन इसका फायदा कुछ नहीं है ना जब वो मास्टर में चेंज होता इसको क्या टाइम देते हैं 24 hours later. But we can chat with it. There is my master ready. Can I trade? So और अगर दिक्कत कर तो चार्ज करके दिखाया था ना बोल रहा है कि वो जिस हेडर बस डिफरेंट थी इसमें मेरा वो अकाउंट ही नहीं दिखा एक्चुअली So ये beginning होती है core CPI, core CPI beginning होती है big news. High impact. Core CPI, core PPI. CPI या CPI
आज थोड़ा सा reasonable. Still not 100%. There's up, down, up. कल जो था वो पैर वो कैसे दिखता है? नहीं मतलब लेकिन कल के एटलीस्ट एक डायरेक्शन तो थी ना कि नीचे ही जा रहा तो नीचे जा रहा ऊपर जा रहा तो ऊपर आज तो समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर जाके नीचे So that's why I'm waiting for a particular area to go, expected high or expected low. Somebody buy this kind of situation like Yeah, like people are buying because they're thinking stock price is low right now, right? So it's reasonably, but because somebody has to buy, somebody has to sell to make the market move. So my analysis says wait for a price to make an expected high. That's the goal. Because it's very close. We are almost like 77. So I will enter at 50,300 and 18,350 for Nasdaq. We're very close, almost. 83. Yesterday's high is about to come anyway. That spike we saw yesterday. एक एडवाइस लेंगे आपसे Mhm. अभी तक मास्टर अकाउंट बनाने में देर लगती है should I open a new one more year Yeah, you can parallel do it. You can as many parallel चलाते रहे. No problem. मंसूर को नहीं कह सकते हो हैं? आप मंसूर को नहीं कह सकते हो तो I think he's the only one he's not aware. Mhm. You guys got orders in at 5,300.25. Okay, so this is where I'm planning to do a short sale. So let's see how it goes. नहीं रेशो दो का केवल एक शो कर रहा है नहीं वो तो शो तो एक ही करेगा पीछे.
89. We're very close. Next hour, 10 o'clock is opening. Come on, don't say from 89 you're done. I think I made a mistake. Okay. And I think मेरे को लगता है कि मैंने EPA अकाउंट वाले को ना लेकिन ना मैंने PA अकाउंट में बोला मैंने EV अकाउंट वाला खोल दिया. Is it really check? yeah, but give me 1 second. Because one account will disappear from your. We're back into very soon. Expected high for Nasdaq is 350 is what I'm looking at. And hopefully we'll respect 5,300. All we can see is hope. Okay, 89, broke 89. तो कह रहा ना कि मतलब नहीं देता है और भी लोग 90. $92. 92.50. Yes, it's up almost 200 points since. Count is gone. Count finished. मैं 2500 है. कहीं आपने प्लस देख के लाइव ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड है कहीं पर आपका पहले आपने प्लस देखा माइनस देखा तो almost close 93.50. Hopefully we'll get 94.50. Where is Nasdaq? Is Nasdaq going to? Nasdaq's almost 311.
Did it touch our? चलो अगर ये स्पाइक अब ये स्पाइक कर गई ना तो मैं शायद निकल जाऊं क्योंकि so I will move my order now. No more 5300. It cut so close, so it came to 97.25. So I'm moving that order up to. Let's quickly calculate Nasdaq. Nasdaq price is 311, 350. So we'll put 350 because 250 plus 100, so 20 points from here. It's shooting down, but so the last high was 97. So तो अभी यहाँ पे जा रहा है तो मार्केट ऑलरेडी पहुंच चुकी है still it's looking at 5300. This Nasdaq is at 290. So I brought it up to 53, 14, 75. So I moved it up because the bounce was so close from 97. And if it shoots through it, I don't want to take that risk, right? So we may miss it, we not, but मैंने तो ऊपर वाली रेंज में ले गया हूँ यार वो 97 था तो मैं ऊपर खींच गया हूँ ऊपर वाली रेंज पे अभी 53 is still valid, it can still happen, but I don't want to risk it, right? Because of course even here it got bounced from what, like 98.
Look at our luck, 52, 98, 50. So it's okay. Don't worry. We'll figure out. So I moved it up to the upper range, 53, 14, 75. Nasdaq wants to. Nasdaq did touch 320 and came down. I think it touched exactly 329 and came down. I think I made a mistake while like opening the account. I think like something got messed up. I think open a new account without the discount code and everything. Yeah, so पूरी फीस दी आपने, तो वो तो रिवर्स नहीं होगी. क्योंकि मैंने वो घर मांगी ना तो मैं वो वैल्यू किया लेकिन मैं कि आप आए थे तो मैंने जो अकाउंट ये अकाउंट तो जब भी आपका टाइम हो तो मेरे को बताइएगा प्लीज. चेक करना कि मुझे करा क्या मैंने. Still is hovering near R3. Let's see where it bounces from. I'm sitting at 53, 14, 75. 1475. Upper range. R3 ka upper range. Because Nasdaq really wants to now push up to, let's see, 50 point to go to Nasdaq and ये मास्टर अकाउंट जो है हमारा 160 करता है. sorry? मास्टर अकाउंट 160 करता है. नहीं 150 का 165 लिखा है. 150. उसमें जो 160 लिखा है 165 है. ये देखिए मास्टर अकाउंट 159 did there no that ये 25 ये वाला है सर 150 का है 25,000. ये वाला क्लिक कर दिया उन्होंने. आपने वो बाय कर लिया तो आपने 50,000 आपने पास कौन सा किया 25,000. इसीलिए अब उनके डिले हो गए हैं क्योंकि आपने पास 25,000 किया था, पे कर दिया 50,000, तब उनसे नहीं मुझे प्लान्स पे जाएं. देखिए 25 की प्राइस 150 है ऊपर राइट पे टॉप राइट मेरे का मास्टर 150. सर ये तो वो तो ईएस है ना, मास्टर आपके वैल्यूएशन वाले. तो उन्होंने ये बात आ दिया है. कौन सा वाला 165 वाला. ये डैशबोर्ड में जाता हूं अगर मैं आप जरा उनसे ना चैट शुरू करें कि मैंने गलती से आपने कल 150 पे किया. नहीं आज सुबह अभी तक क्रेडिट पे आया नहीं है. अभी देखिए ये इन्होंने मास्टर चेंज कर दिया आपने ठीक है. आपने पेमेंट कितने की है? क्रेडिट कार्ड में कुछ नहीं दिखा रहा. मैं क्लिक 165 वाले पे करता हूं. तो आपने उनसे कहें कि कैन यू रिफंड मी द $15 because I accidentally bought EA and when I was supposed to buy the master. है जी, कट के दोबारा ला लिए जी. No problem. So I will do ये लें जी. मैं स्लाइटली ऊपर ले गया हूँ, स्लाइटली ऊपर 20 पे ले गया हूँ क्योंकि जो 4 कैंडल्स पहले हैं ना, सो ये 20 पे ले गया हूँ 53.20. So I've moved the order to 53.20. So now my entry is at 53.20. ना भी आए तो 53.20 पे लगा दीजिएगा क्योंकि 20 का नंबर है जी. 20 का क्या नंबर है?
नहीं नहीं, एक आप दोबारा कैंसिल करें और फिर अपनी क्वांटिटी चेंज कर देना। एक सेकंड, ये सारे काम आपने पहले करने होते हैं, अदरवाइज रीजन ये है कि मैं 240 का चार्ट देख रहा हूँ और वहां पर 5320 जो है ना, 5 कैंडल्स पहले वो नंबर है, उसका जो स्पाइक है ना हाई स्लाइटली अबव है। थोड़ा डैशबोर्ड पे देख लो। मैंने 165 पे कर दिया। Because around April 4th, your It looks like you paid 165, and here the issue with that you bought an evaluation. correct. लेकिन अब डैशबोर्ड में मास्टर भी दिखा रहा होगा। हाँ, नहीं नहीं, उन्हें तो कर दिया, पेमेंट तो कर। So is it possible if you can refund? I don't need, ये कह रहे हैं कि I don't need. So it worked. It went to 30.50 and it's struggling right now. जो हमारा पहले वाला नंबर है। हाँ, जो ओरिजिनल नंबर था। Yeah. Come on. It worked beautiful, but we were too shy. Officially, the area is done, the bottom range, but और अगर रिफंड नहीं होगा तो you will change it. okay. ठीक है। Officially, the bottom line 5300. हाँ, 5300. Still, I don't have a lower high here. अब हो गया। इसे चेंज करना है। तो करते जाओ ना। वैल्यूएशन में कौन दिखा रहा है? Make sure your trade of it, your everything is open in case market.
ये तो कोई नहीं होगा। बैक इनटू, हाँ वो 53 पे वहां से है, लेकिन मैं अपर रेंज पे बैठा हूँ 20 पे। But we are in expected high for both ES and Nasdaq. Second attempt. क्या चीज? ये क्या चीज? नहीं, ये तो मेरा ही नहीं है, ये मेरा नहीं है। We don't charge anything like that. That's a fake telegram. Yeah, we don't charge anything. 679 ना, नहीं ये तो नहीं। कहाँ से लिया आपने? नहीं, superiorus.com से। नहीं है, नहीं, ये हम तो कुछ भी नहीं चार्ज करते भाई। It's nothing like this. I don't charge anything. Again, over and over, it's testing our expected low a few times. आज मैंने रिस्क नहीं लिया। आज एग्जैक्ट एरिया से बाउंस हो गई। 3 बार बाउंस हैं? 3 बार हाँ। सब्सक्रिप्शन आ रही है लाइव टिकटॉक पे। नहीं यार, फ्री में। I don't charge anything subscription. सारे फ्री में जुड़े हुए हैं। We don't have a subscription. Still waiting at 53.20 on MES. Did anybody take
M&Q 350 नंबर दिया था आपको, लिया ना, ले लिया? लेकिन वो सारा ऊपर ले गई जब बंद नहीं नहीं, किया, लेकिन 350 से नहीं, तो वो गया था, गया था। सर 53 से आ गया, 50 पॉइंट था। आई होप मैंने सो। 930 वाले को लिया था। ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि 50 का मैं नंबर बोल चुका था आप लोगों को कि 50 से लेनी है। ठीक है ठीक है ठीक है, नैस्डैक ले ली ना सारों ने, क्योंकि हमने अभी ईएस का मैं इधर वेट कर रहा था, नैस्डैक मेरी मिस हो गई। गुड, सो नैस्डैक इज डन टू द डॉट, दैट्स व्हाई आई पिक 350. The Nasdaq trade is done. If you didn't take, you didn't take. Just saying. Because the number I had given you, the 350. We're back into some. $40 done. Very good. NQ. So now we take the upper number. If you have not taken the 350, now wait for 400. Nasdaq, wait for 400. Because I couldn't take M and Q. I was waiting on ES, so ES is back into that zone again. You are still waiting at 53.20. Yeah, I'm still at 53.20. But Nasdaq, you wait, take now 400. Nasdaq 350 is done. You too. Oh, what happened here? कुछ फिर क्या दिया उसने? बंद कर देंगे फिर। Somebody took 40 points from MNQ from 350. Full 40 points. That's good. That's amazing. ऐसा ही सेटअप है तो 50-20. Fifth attempt of I'm going to cancel the 20 now because this is kind of gone.
But if you had taken the Nasdaq 18,350, you're done your trade for today to the dot. Somebody took 10 points, 5 points. But ES, I'm still waiting for. If Nasdaq goes to 400, ES will go to 20. And just to, somebody asked me, where did you come up with a number between the 320 to 400, right? If you go on your 240-minute chart, the 240-minute, yesterday there was a spike. The spike went as high, you will see a green line on 240. So that spike happened around 360. So I said, all right, we'll take the 350 and then, but of course, our stop loss would have been somewhere around 420 or so, our stop loss in case it goes against it. But so 18,350 trade is done. It's down like 75 points from there. हाँ वो कल वाली spike जो आई ना हाँ. And where did I come up on the number for your 20? If you go on, give me 1 second, MES, 23 का नंबर कहाँ से ला रहा हूँ? 60 मिनट का चार्ट देखें. अब 60 मिनट के चार्ट में आपको एक नंबर नजर आएगा. Give me 1 second on MES. Is it 60-minute chart? Give me double. Let me. If you look 60-minute chart and go to like April 4th, 5th, there's a candle that got closed around 53.19, 25. Few like candles back on a 60-minute. So that's where I'm pulling the number from of 20. So now we will wait for 400. If you take Nasdaq 400, and then I'll see what I can do for. हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल वहां पर वो बैठा हुआ है जी 100%. So just watching these few charts, 60 to 40 case, what's the best case scenario? But like if we had taken 5,300, still made 5 points, but from 2 days experience, Nasdaq being out of sync, I didn't want to, but Nasdaq did exactly on the spot of yesterday's high of the spike. So सर जा रही है but उसको जाने देना 400 यहाँ से 100 डालें और उधर से 20 डालें. So if you were to take 52.95 plus 20, it will put you somewhere around 53.15 area, because that's where the Nasdaq will fall in, right? So from here, Nasdaq is only to get to 18,400 minus 18,300 points. The Nasdaq has a 100-point gap in our range, while ES will be 20 points. So it'll put it beside. So maybe 19 I will enter. MES 19, 18. उस वक्त जाके देखेंगे कि. So I missed my Nasdaq today. It's okay. No problem. I wasn't paying attention. Was doing an any desk and. 18,320 is not. नहीं सर 350 के बाद 320 कहाँ से सेफ हो गया.
Okay. But these are the area trades, so not black candle, nothing like that. So just saying. I know somebody who was long last night. सुबह उठा सारे अकाउंट भरे हुए हैं, फिर अभी सुबह लूज कर रहे हैं. अशरफ हाँ, और सारे दो क्योंकि वो आपको पता है 5 माइक्रो लेके ना छो जाते हैं, और ये इस वो कहते हैं यार इतनी गिर चुकी है मैं लॉन्ग जा रहा हूँ. But it has gone in the other direction too, right? So So just in case you guys don't get a signal, I'm still announcing my number, right? Let's say, okay, where am I? Let's say, oh, you're like, all right, it's an area trade. So I MNQ, I didn't send a signal, but I announced it. That's the number we're gonna go in, right? So, and I'll announce much earlier because now we have a lot of this. No, some users don't know how to place an order, really. So for that reason, I said, okay, I will put in the order too. But let's say, for example, he missed the quantity ratio thing, right? So now you know the number. The number is, so now waiting for MES to go above the upper range of, yeah, exactly. So maybe 15 would be 15, 16, 17, 18. This is where I'll start taking the risk, but definitely upper range. तो आपके बेसिकली 15 का नुकसान हुआ डॉलर का. कोई ट्रेड गलत लगे सारे गए यार दोबारा ये भी जाना पड़ेगा. क्यों? What happened? I don't know. जो हो गया वैसे मार्केट सारा जैसे ही ट्रेंड कर रहा एरिया ना
And this is the spike I'm waiting for on ES. Just to let you guys know, the spike that I'm waiting on ES is this one. Right here. So if you look at the spike that happened around here, before April 4. So if you look at today's areas are falling in here, right? So it has a historical value to how far can it go. So you see this cluster? So I'm looking at this. So 1, 2, 3, 4. So this is where I'm picking up the 23, 24. So if you take a 30-minute chart, you can pick up these. What's the highest possibility you can go? So we have a high of 53.22. So around 18, 19, 17, I will do a short trade around that price. Not before that. But I know it's falling like crazy, but I think our area is done, but that was my, and Nasdaq has fallen to back to 300. The area trade is still. I'm gonna copy this. Okay. Officially, we're done if anybody took Nasdaq, but it is coming down fast and hard. हाँ दोबारा देखिए मैं दोबारा तो आपको पता है लेता नहीं हूँ अभी क्या प्राइस चल रही 100 पॉइंट 100 पॉइंट आपने 40 लिए ना हाँ हाँ मेजोरिटी मेरे यूजर्स ने 40 30 15 तो वैसे ले लेते हैं तो MNQ 2 इतनी चाहिए 780 पॉइंट चढ़ी है कुछ तो बनता है कोई बात मैंने पर्टिया में आज कुछ नहीं ले सका क्योंकि मैं असल में ना इधर सेट कर रहा था उधर वो मेरी नजरों के सामने से ही पहले जब गिरी ना मैं कहा यार ये तो हो गया है कह दे नहीं 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 नेक्स्ट कह देना नहीं क्या असल ਵਿੱਚ मैं नंबर क्या चुका सी सवेरे 350 ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਆ मैं ES ਦੇ ਵਿੱਚ चलो इट्स ओके इफ आई मिस दैट आई मिस दैट इट्स ओके अच्छा क्योंकि मुझे कल की स्पाइक पता थी ना 360 है वो जब फेक न्यूज की स्पाइक आई तो हमने कहा 350 को तो टेस्ट करेगी नहीं नहीं वो थोड़ा सा अबव चल रहा था हाँ दोनों चले रिस्पेक्ट किए लेकिन मुझे उसमें थोड़ा नास्डैक की वजह से ना पिछले 2 दफा all right let's do indicator जी सर लिया नास्डैक पहले ये होता है 350 नहीं मैं 300 वाला ले अच्छा बड़ी हिम्मत है जी ये 3 ਤਾਂ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ नहीं पहले 320 तो एरिया शुरू हो रहा सी ना नास्डैक का 320 तो 400 है 320 है ना नहीं मैं नीचे वाला लिया ओके ओके 3 से नहीं 320 है यार 320 नहीं स्टार्टिंग बैलेंस का है स्टार्टिंग बैलेंस कहता हूँ स्टार्टिंग आपका एंट्री कहाँ थी कंप्यूटर ने प्रेडिक्ट किया था 320 से 400 हाँ तो हमने वहां 350 लगवाया था ठीक है सर निंजा ट्रेडर
So just like legends. And take profit is there only one time fee? अगर आप 30 दिन में कर दें तो one time. So if you pay the $119 because the its price is 170, if you use the code, it gives you for 119 or 109. If you finish the exam in 1 month, there is no PA fee. But you must finish it in 1 month. Otherwise, they'll charge you. So it's 1 month का आपके पास pressure है. And 50,000 में जरा मार्जिन ज्यादा है, 2,000 है ना, और 109 में 25,000. 25,000. तो टाइम लगता है तो 10 minutes लगते हैं. मैंने इनका कनेक्शन बनाया था। अच्छा एक ninja, हाँ हाँ, डबल क्लिक करें. ये वाला. TPO मैंने take profit। हाँ ये वाला. ये देखो ये। हाँ ठीक है. नहीं सॉरी. हाँ जी ना। हाँ ठीक है. पर लाइव अकाउंट नहीं आ रहा। नहीं, आप जाएं पहले, एक तो हॉटस्पॉट से करें, 2 लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और मेक श्योर ट्रेडोवेट पे लॉग इन करें. वो कर दिया सर, एक मिनट, ठीक है. अब सिर्फ हॉटस्पॉट से कर. दैट्स इट. मुझे व्हाट्सएप एनी टेस्ट कर दे. अभी मैं पूछ रहा थी कौन सा लिया सर, जो एक प्रॉफिट का जो अकाउंट है, इज इट 25 और 50? लेट मी डबल चेक, लेट मी लॉग इन. देखें, जो अकाउंट तो है अभी मैं 25,000 का, you have to make 1,500 and you can lose 1,500. Okay, that account, if I put in the code super areas right now, let me double check. No, it is up showing for $105. If you take the 50,000, that's 119. But your target is double. Now you have to make 3,000, right? So Is there any difference for daily videos? no. So एक सेकंड, मैं आसान कर देता हूँ कि पीछे वाली लाइट 1 मिनट बंद कीजिएगा. Okay, let me make it easier for everybody to kind of figure out. Okay, 25,000, 50,000. So I think they give you 2,000. 0, 53,000. Yeah, max 5. Yeah, so TPT 109, 105 or 9, something like that. 119. So this is the ratio. If you buy the $25,000 account, they will give you $1,500. You have, so number one, you have 30 days. If you don't complete your exam in 30 days, they'll charge you 109 again. Is it 109? Yeah. 105. So let's do this. 105. However, if you manage to complete it, there is no PA fee. Now, in my opinion, this is a scam. And why? What happens is majority people are failing EAs anyways, right? So they're collecting 4 times the money. How much is an EA? $33 on Legends, right? So if you are paying $33 and you're paying $150, so you are paying around $185 US for one PA. Here, you're paying 105, 3 times more. However, what is the ratio people completing? So they're looking at, hey, everybody's failing anyway. Why not we just give them this idea? So if 10 people try, they got 33, 33, 33. So you can buy 3. So it's up to you. You still have 2 stages here. You still have 2 stages here. Some users have this feeling, I don't have to pay for a PA. Yes, if you're a bit of an aggressive trader, you want to finish fast, you are okay. I know a lot of people who finish in 1 month, they don't have to pay a PA fees. So this is, if you have to look at yourself
am I going to be able to make $1,500 in 1 month? Am I going to be able to make $2,000 in 1 month? So, and they have, so 30 days, number 2, 5 days. They cannot let you do this earlier than 5. Number 3, max here is 750. Over there is 1,500. That's the max in 1 day. Number 4, of course, 4:30. 4:30 p.m. close. Number 5, it is end of day. So you don't have live trailing threshold. And that's it. So once you complete that, however, please, I have to rewrite this. Now you are dealing with 4 companies: Legends, Apex, Bullnox, and Take Profit. Right now, these are the top 4. All of them in the PA round 2 has a live trailing threshold or live trailing drawdown, you can call it. So now you have to treat it like Apex. You have to treat it like, if you saw, so this is what mostly happens. If you take a trade, I keep saying it, let's pick a number, 6,000. You took a buy entry. आज की क्या price है? ES की क्या? हाँ, कुछ 53.20. If you take 53.20 and you went up to 53.25, what is normally the profit here? 250. 5 point 250. All right. So your P&L is showing 250. You're great. You're happy. You're excited. I got 5 points. But if you came down and you closed your trade at 53.21, how much money you're making? 1 point, $50. Great. You close. You got $50. But this is how in the round 2, but Apex and Bullnox, even round 1 is live trailing threshold. How will they write this? They'll give you $50. Congratulations, you got 50. However, how much did you lose from the maximum? Then your threshold goes down to 1,300. Then you're like, what happened? I didn't lose any money, but why my threshold went down? This is where Bullnox will give you the most. So how to combat that? You go in, you make your 2 points, you get out. You go in, your 2 points, take a trade, get out. You don't let your trade keep running. So, but all these accounts, once you reach your target, no more live trailing threshold. It's the first 1,500, first 2,600 is the problem. So live trailing threshold is the biggest problem in funded account. However, if you take the company called Perdia, they don't have it, but it is very costly. Perdia does not have this issue at all, but accounts are expensive, right? So, sir, वो start होते हैं for like $300. Some users are taking this advantage. They're saying, all right, let's look at Perdia's deals right now. वो उन्होंने क्या किया आपको डायरेक्ट टीपीए दे रहे हैं ना 15 वाला. Okay, so let's do superareas.com. Let's click on Perdia Capital. So instant funding. Okay. Don't worry about these prices. If you take this right now, it is $450, right? So $450, you go in just like a direct to your, so you can skip this line. If you don't have to do an EA, you don't have to do a PA, you pay them $450 and you're done directly into a PA. So, but remember, there's no end of the day issue, no live trailing, you don't have to do stage 1, you don't have to do stage 2. So what is the money that they're giving you? For $450, they're giving you $1,500. Basically 3 times your investment. So if you look at your EAs, how much is an EA? 32. So if you blow 5 EA, I'm just saying, giving an example. So 32.5 is 150, right? And if you have a PA 150 and you manage to, let's say, blow 2 PAs,
you're back to this situation. So all these companies have put together this planning based on, so some user says, I don't want to do stage 1, I don't want to do stage 2, I don't want any rules. So this is the best deal amongst them all. You pay $450, you got a $1,500 account. If you want to open a real account, $1,500, you need real $1,500. Right? So, But sir, what is this 2000 for the first player payout? क्या चीज? Reach 2000 for वो ये first कह रहा है payout? कि आप 2000 तक, आपका टारगेट क्या है? $2000 पहुंचना है, तो आप 2000 पहुंचे तो आप पे आउट ले लें. तो इसमें कोई स्टेज 1 नहीं है, कोई स्टेज 2 नहीं है. This is as close to your real capital. So I know a lot of people get frustrated. Let me put my glasses on. And they're saying, you know what, this is annoying. I don't want to torture anybody. The reason I put you through your EAs, PAs, and everything is, if you will lose 1,500, how many accounts can you buy? Maybe 1 or 2, and then you will give up. With the EAs, you kind of correct your mistake. All right, hey, I overtraded. I put the wrong lot side. So you kind of have to go through the extensive. Then you can, if you can trade by any means, and you feel like I don't want to go through this, this is your next best setup. But in your case, you bought this $25,000 account. This is what you have to do. You have 30 days to complete. You have 5 days minimum. So if you complete in 30 days, they will not charge you, move you into a round 2. So your total cost is 105. You cannot make more than 750 in this account. And close the trade at 4:30. It is end of the day, and you're okay. So whole stage. Per diem end of day है. ये उसमें तो PA की है ही नहीं. So like so. हाँ नहीं ये 1500 मैंने इस अकाउंट का लिखा है क्योंकि 50,000 वाला है. अगर किसी ने 50,000 वाला लेना अपन नहीं 750 एक दिन में मैक्सिमम. आपका अच्छा ट्रेड लग गया, आपको वो 450 वाली स्ट्रेस नहीं है. टारगेट 1500. पीए में भी सेम चीज चेंज हो जाती है, सेम है, लेकिन उसकी एक्सपायरी नहीं है. कोई 30 डेज नहीं है, कोई कुछ नहीं. हाँ नहीं वो ये कह रहा है कि 5 दिन से पहले हम आपको पास नहीं करेंगे ना, तो आपका खाली अकाउंट 5 दिन मिनिमम है. $33 सुपर एरिया $70 है. उन्होंने प्राइस चेंज कर दी. नहीं लेजेंड अगर पहले $33 तक था लास्ट. नहीं अभी आप सुपर एरिया 70 डाल के ट्राई करें. 50 का कर दिया 50. So they raised it to $50. प्रमोट पता क्यों नहीं करता मैं, कहाँ रिदमिक सिखाता फिर और कहाँ से मैं आपको क्वांट आवर सिखाऊंगा. राइट सर. You have to work every day. Not every day, but when you find an opportunity to put it, but there's no stress. Now, how can I make it easier? Let's draw a couple of. I'm working a full-time job. Sometimes I don't have a time. So you don't have to, once you're inside a PA, like the round 2, literally you have no stress. You see an opportunity, you put a trade in. Like today, I feel a little crap. I missed 350. It has gone down to 209. I put 355. So हाँ आपने लिया ना, अब मेरा वो ट्रेड मिस हो गया, ठीक है, लेकिन कहने का मकसद है अब मैं सिर्फ उस पर गम करता रहूं, यार ट्रेड मिस हो गया, अब 11 बज गया, आज ट्रेड ही नहीं डाला, अब शाम को जाके एग्रेसिव खेल लूंगा. लेकिन पीए वाले जो हैं वो रियल मनी की तरह हैं, आपके पास रश नहीं. आप बेशक 4 दिन ट्रेड ना करो तो ना करो, कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आपको ट्रेड करना है. आपने 3000 बनाना है, लेकिन उसको देना आपको उन्होंने आपने 53,000 करना है. एक क्वेश्चन, let me ask this. If you guys joined, let's say 4 months ago, 3 months ago, 14 type of trade, where let's erase the last 4 days
from our memory, because this is insane. The spikes, the fake news, the tariffs, markets are stable today. I believe by 2 or 3 months, you're able to take few good trades along the line, right? Then you decide, what are my options to make money from this industry? Okay, evaluate. I don't know your bank balance. I don't know your financial situation. I don't know. So if you're new, I put you into these things because instead, so you're like, all right, I'm ready. How can I earn something? So I give you an option: do legends, do apex, do bull knocks, do take profit. If you are in and out, that is telling you that you're still not stable. If you take an exam and then you're blowing an account, 2 accounts, 3 accounts, 5 accounts, 10 accounts, because if you go to GFF, how much money you need? At least $2,500 to open a real account. If you are not stable inside a virtual money, how can be used? Because then you will play the same way and then account is gone. And that will be the fastest $1,500 you will blow. इसको करेंगे बंद, कहेंगे यार trading मेरे लिए नहीं. ये ऐसे होता है, right? This is what we see. However, people are making money in EAs, PAs, lots of it. It depends on आप comfortable. जिस आपने कहा मेरे पास एक trade डाला आज, आपकी job है. अब जब अपॉर्चुनिटी आएंगी तो ट्रेड डालेंगे ना. तो मैं बैठा रहा हूं, पहले मैंने लगा दिया 5300 पे, ठीक है, मैं आपके सामने ये ट्रेड डाला है. This was my number, right? So I looked at it, I'm doing an analysis, the price went to 52.97. You know what? I took that trade off because my mindset for the last 4 or 5 days, I put an order and then it hit the extreme low. So I'm like, okay, what can I do? So I moved it slightly, 53, first time, I think around 20 zone, based on my analysis. And then the second trade for Nasdaq was 18,350 was the number that we shouted out. This got hit, this didn't. I didn't take a trade. Now, just because I didn't take a trade, it's okay. It's not like I must trade every day. It has to be, it has to make sense. Retracement, divergence, mid-band, all of these have to make sense. What happens, majority is, everybody comes in that, hey, I didn't get it, like, aaj ki dihadi nahi lagi, yaar, aaj ki trade nahi, what? I'm not trading. Yes, I do have a bit of a luxury. I can pick the 2 to 5 session. And I'm just watching numbers. Honestly, like last night, we were just watching numbers. Number to aapko pure din ke liye aa gaye. So some users say, well, you have a luxury. You can trade here and sit 10 hours from 9 a.m. until 1 o'clock. You will get an opportunity. Now, today I got an opportunity, but I missed it. So I view trading slightly different. I go in, if I see, my favorite type of trade is area trade. If the price hits that support and resistance, I will go in, or I won't go in, right? So it truly depends on what kind of a, I had on TikTok, I was reading somebody's road. I'm already done 4 low of the bars. Like एक bar 30-20 में low of the bar, slow market में वो done भी हो चुके हैं. Right? So I go on radio and I say, man, this market is open 23 hours a day when the market is slow. Again, please ignore last 4 days. This is not normal by any means necessary. Like, this is not how market works. Today, we finally have somewhat of a calmness, right? So hopefully if it goes up, go with the mid band, goes down, go with the mid band, go. So up. मैं सर ये कह रहा हूँ, आपके वैल्यू पैसे आपने डिसाइड करने हैं. मैं आपका सस्ता काम करवाना चाहता हूँ कि अगर आप $33 लेंगे तो अब कुछ लोग नहीं केयर करते, वो डायरेक्ट पर्डिया में जा रहे हैं. ठीक है भाई, पैसे हैं, होगा ये 4-5-6 पर्डिया उड़ाने के पास, आप कहोगे यार दिस इज नॉट फॉर मी, नॉट नोइंग कि एंट्री कहाँ से डालनी है. क्योंकि होता ही है कि आपको लगा कैंडल ऊपर गई, आपने बाय दबा दिया, आपको लगा कैंडल नीचे, आपने सेल दबा दी. ऐसे नहीं है जी. तो and most of the time, if they are doing Nasdaq with me, we're giving you the numbers in advance. So, would take profit. हाँ जी. So see, EA, 15 दिन, मतलब within a month, clear कर लिया, right? Yes. And you don't have to pay anything for the Correct. That's what So- their thing is. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ PA
हाँ जी. उस दिन तो भी तुसी within one month No. PAs, all the, sorry, I keep coming in here. The round 2. Now, in legends, they call it master. In bullnox, they call it master. In apex, they call it a PA. In here, they call it a pro account. So once you go from a pro account, you don't have a deadline. You can take 10 years to do it. Like there's no monthly fees, nothing. What is your target? Again, it starts at this. So if you were to write down, so all they want to do is they raise it by $100. So how much you have? You don't have 30 days. You have infinite amount of money. If you can make $1,600, they say make it in 1 day. We don't care. Apex has a 8-day rule. Legend has a 10-day rule. Perdia has a 10-day rule. They said 1 day. We don't care. PA. एक दिन में कर सकते हैं. So what do they want to see you? Make 1,600. Don't lose 1,500. They said there's no max anymore. You can make whole 1,600. Number 3, 450. Now this changes. It's no longer end of the day. It's like bullnox, apex, legends, live trailing threshold. Now I do have a lot of users who have cleared the PA stage. What does that mean? The moment you get to 2,600 and 26,600, you made your 1,600. Anything above, you can withdraw. Anything. So this is the firm after Perdia. We are really enjoying it because it has less rules. What are less rules? If I got to 26,600, all I have to do is just make $250 and withdraw daily. They give you a daily payout. So this is a company that gives, you don't have to wait for 10 days, 8 days, 9 days. You can withdraw every single day. Take profit. So trust me, 2026, let it hit. And sir, कहीं मतलब ये आपको सारा कुछ आइडिया का आया था कि अमाउंट है ये और सिर्फ $100 है एक एक्स्ट्रा नहीं देखिए अभी 105 है ना. मैं अभी मेरे हिसाब से ये स्कैम है. पता क्यों? 105 उनको आ गए और आपने अगर फेल कर दिया ना, उनको 3 गुना पैसे मिल गए. ठीक है ना? अगर एक ने $33 देने थे तो बल्कि 50 भी रख लें, 50 का एक है तो उन्होंने आपसे 2 दफा ले लिया. उन्होंने कहा यार इसने फेल ही करना है तो पूरा 105 क्यों ना उठाएं इससे. कितने पास कर रहे हैं? मैं अभी बात कर रहा था, 4 फंडेड कंपनियों से एक्टिव डिस्कशन चलती है इस वक्त. नहीं आ रही है. वो कह रहे हैं यार अपना स्टूडेंट हमारी तरफ भेजें. लेजेंड भी है लेकिन हमने उधर भेजना जहां सबसे ज्यादा आपको फायदा हो. मेरे हिसाब से इस वक्त सबसे नंबर 1 कंपनी टेक प्रॉफिट है इस वक्त. मे बी ए न्यू कंपनी कम्स अराउंड सेज बेटर रूल्स. सो लेकिन बिगिनर्स के लिए अभी भी लेजेंड. तो आपने ये बना लिया, कोई मंथली फीस नहीं है इसके बाद. 105 दिए, आपने पास कर लिया, 1 महीने के अंदर बुलनॉक्स की तरह हो जाता है. बुलनॉक्स से आपने दिए $16, राउंड 2 के आपने दिए 150. अब आपकी मंथली फीस तो नहीं है ना, डन हो गया. तो this is how this I can explain top every funded companies, but every time I keep saying, man, pick something if you can trade. क्या चीज? नहीं ये कह रहे हैं ना कि टेक प्रॉफिट के 2 स्टेजेस. मैं दोबारा लिखूं. टेक प्रॉफिट 2 स्टेज, एपेक्स 2 स्टेज, बुलनॉक्स 2 स्टेज, एफटीएमओ 2 स्टेज. ये सारी 2 स्टेजेस वाली हैं. हाँ, लेजेंड्स 2 स्टेज, ट्रेडिफाई 2 स्टेज, एमआई फंडेड, ये सारी 2 स्टेजेस है. जब आप ऑनलाइन जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये स्टेज 1 स्टेज की है, 2 स्टेज. एंड में फिर मैं दोबारा आता हूं कि यार आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, कॉस्ट क्या है. अब स्टेज 1 की कॉस्ट देखें,
अगर टेक प्रॉफिट ने क्या कहा, आपको कहा 105 दे दें, हम 1 और 2 को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, प्राइस में। एपेक्स ने कहा हमारी प्राइस लेस से वो $33 लेती है स्टेज 1 की और 125 लेते हैं स्टेज 2 की। बुलॉक्स लेता है $16 और $148, बट ये मैं सेल की प्राइसेस लगा रहा हूँ। एफटीएमओ तो लेता ही काफी ज्यादा, इसको है $400, $1400, और ये है लेजेंड्स की लेता है 33 + 150। ये कॉस्ट आपकी तकरीबन पड़ रही है आज के डेट में। टेक प्रॉफिट यू आर सेइंग कि वो दोनों स्टेजेस को $105 लेके वो कंबाइन कर रहे हैं। हैं। 1600 बनाओ, 1600 बनाने के बाद देन यू स्टार्ट। यस यस, दूसरी स्टेज, पहली स्टेज में आपने कंप्लीट करना है। देखिए वो क्या करते हैं, आपको 10 प्रो है, $10,000 तक आपको फ्री दे रहे हैं, कमीशन नहीं है। फिर जब आप 10,000 से ज्यादा कमा लेते हैं तो वो आपको एक स्पेशल अकाउंट में ले जाते हैं। सो दिस इज वेयर दे गिव यू अनलिमिटेड विड्रॉल्स। So it truly really depends on your style. What is the cost of borrowing money? Here, take profit, you're investing 105, they're giving you $1,500, give or take. So here they're giving you 1,500, here they're giving you 1,500, here they're giving you, yeah, same, I think slightly more, 2,500. And Legends, they're giving you 1,500. टेक प्रॉफिट का एक बार दोबारा से वो स्टेज, दो स्टेजेस बता रही है। पहला स्टेज है उसका कि 1600 कंप्लीट करो। नहीं, पहला स्टेज 1500। 1500, ठीक है। अब मैं बिल्कुल ना सेंटर में ड्रॉ करके देता हूं आपको। सर कोई एरिया आया तो 10 देना, शाउट कर देना। नहीं ठीक है सर, 40 भी देखो, 40 तो मतलब $80 पर दिया यार। है हाँ, ये तो है। April 8, 2025. Today is you decide to buy something, and it is this $105. So cost 105. I will say a renewal. May 7, 2025. That's your renewal. You have 1 month. Your account will be instantly open with trader weight, and just like Legend, 25,000 and 1,500. This is the 1-to-1 ratio, 26,500 and 0. So what are your goals? Make 1,500. Don't lose 1,500. We're great here so far. 30 days. Okay. You have a month. Number 4, 5+ days. You cannot do this in 1 day, 2 days, 3 days. Okay. Number 5. In this case, $750 max in 1 day. Meaning you can finish as quickly 2 days. That's really $750. Third day, $1, $1, you're done. Number 6, 4:30 close. And number 7, I will say it's end of day. All that, there's no live trailing threshold. You saw 100, you closed 0, you got 0. So this is your challenge. How much does it cost? 105. That's it. If you manage to pass this, you go into stage number 2, or it's called Pro. Slightly rules. Of course, you didn't pay anything because so your cost was $0.
because you already paid 150, but you finished it before May 7th. Number two, make $1,600, not 50, 100 more. Number two, don't lose. Yeah, because 2 stages, right? So this is, First you have already done Yeah. 1,500, now you have to do 1,600. yes. So just like But it's the legend, same account, you are just not paying the anything. name changes, goes from apprentice to master, same thing. Here, you did legends, you did master apprentice, you did master apex, you did EAs, you go into PAs, bulldogs, you go to master. So don't lose 1,500. Number three, infinite money daily. They don't care how much you make. You can go in and make full 1,600 in one day. They don't care. How would you do it? I don't know, but unless you was. So there's no 5 days. That's it. 4:30 p.m. and 5 condition becomes live trailing threshold. This will really annoy a lot of people. That is it. There's literally no other condition. यही है कि देखें मैंने यहाँ लिख दिया ये लगा दिया इसको टेस्ट लगा दें ये टेस्ट है और वो पेड अकाउंट है अब फर्क देखें लेजेंड कहता है 10 दिन ट्रेड करो ठीक है ना लेजेंड कहता है एटलीस्ट 150 बनाओ एपेक्स कहता है 8 दिन ट्रेड करो एपेक्स कहता है -30% में नहीं जाना एपेक्स के तो रूल्स सबसे मुश्किल है इस पूरी इंडस्ट्री में ये वाले कहते हैं भाई आपका अकाउंट 26,600 हो गया आप रेडी टू गेट पेड दैट्स इट देयर इज so this I know is the easiest between amongst them all but here's the you're coughing up more money up front and if you fail it that's what they want keep failing नहीं पहला 16 नहीं तो आपका बैलेंस हो जाएगा so this is how I did it I took a $25,000 account and I turned into a 1,600 all right I have a $1,600 buffer there first thing happens to your account it becomes end of day so that's the first thing happens your account has gone into because if I make $100 I close at 50 I got 50 there's no more threshold nonsense now all they want to say is make 250 and withdraw that's there's like the smallest amount for you to give money so you don't have to make 250 in one day you can make it in 3 days 2 days $75 80 there but the moment you have 250 made you can withdraw and money comes in 37 minutes 37-minute money just shows up to your account And you can still do them on Ninja as well. it connects with Ninja just like everything else is the same नहीं मैंने कहा है एक है हाँ जितना बढ़ता जाए उसको वो आप उसको $6,000 पे ले जाए और 5,000 निकाल दें नो प्रॉब्लम वो यहाँ पर जो आपके कपल बैठते हैं उस्मा जी राहत जी उन्हें पास किया पहले ही दिन 8,000 बना लिए या 6,000 बना लिए और शाम को ले लिए it's okay he plays Nasdaq he got in he got out so उसमें डिसिप्लिन नहीं चाहिए ठीक है उसको ये जरा लीस्ट अपना सेल्फ डिसिप्लिन है आपने कब रोकना है कब नहीं रोकना राइट नो कुछ नहीं है सिर्फ ये है कि आप $250 मिनिमम आप विड्रॉ नहीं कर सकते आपने आए आप जिस दिन आपका अकाउंट 26,600 हो गया आप this is your live account like kind of But you have to leave 2,600. no 1,600 1,600 वाले वो 25,000 with $1,600 आपको उसमें हमेशा छोड़ना पड़ेगा yes हमेशा उससे ऊपर आपको वो देंगे उससे नीचे चला गया the account is blown $1,600 अगर 1,500 हो गया तो फिर ये वो तो रिकवर हो जाएगा ना basically this is your हाँ मुझे आप ना एक्चुअल लाइव सिनेरियो दें ये पीए हम यहाँ लगाते हैं आपका ये डे 1 है
रियलिस्टिकली दिस कैन बी डन इन अबाउट 15 days. रियलिस्टिकली अगर आप माइक्रो से खेलें, 5 माइक्रो, 2 माइक्रो, 3 माइक्रो, 4 करते करते आप निकल जाओगे इसमें से. So the moment your account balance goes to 26,600, अब आपका ये फ्री अकाउंट है, उसके अंदर $1,600 पड़ा है. लेकिन का पक्का है ये का कुछ चक्कर नहीं है. कुछ भी नहीं, आप हो गए ना, आपने ये सारी मेहनत करके इधर आ गए हो ना आप. 1600 से अगर माइनस चला जाए वो फिर रिकवर कर सकते हैं. आपके पास Blow नहीं होगा. आप नहीं ब्लो होगा. अगर ये 1500 जाया किया तो अब आपके पास 1500 रह जाएगा. यस, हर चीज यूएस है, आना भी जाना यूएस. देखिए नहीं देखिए, ये तो 105 का है ना, तो 105 को इस वक्त 141 का रेट चल रहा है, 140 का. $150. यस तो बेसिकली हमें आपने $105 दे दिया यस. और आपने जो है पहली बार में 26,600 बना दिया. नहीं सर, पहले ये स्टेज करनी है. 2 स्टेजेस हैं, अच्छा, दो स्टेजेस दो स्टेजेस हैं. उन्होंने सिर्फ बना लिया हाँ और सेकंड स्टेज में दोबारा 1600 यस, दोबारा 1600 बनाना. तो आप रियली यहां बना रहे हैं $1500 और यहां बना रहे हैं $1,600. $3,100 के बाद आपको कुछ रकम आनी है. ये आपका चैलेंज है, $3,100. अब एपेक्स में पता कितना है? एक सेकेंड, ये आपका आ गया टीपीटी. लेजेंड्स वाले कहते हैं पहले 1500 बनाओ फिर 2000 बनाओ, तो वो 3500 मांग रहे हैं आपसे. ठीक है, ये लेजेंड हर स्टेज का है ना. ये बना रहे हैं 1500 प्लस 1600. स्टेज 1, स्टेज 2. लेजेंड कह रहा है स्टेज 1 में 1500 बनाओ, पहले आप पास करो. स्टेज 2 में वो कहता है 2000 बनाओगे तो 1500 दूंगा. ठीक है. नंबर 3 एपेक्स, पहले आपको बनाओ 1500 फिर आपको बनाओ 3000. ये आपको मांग रहे हैं $4500. अगले फिर आ जाए बुल नॉक्स मांगते हैं आपसे पहली स्टेज में वो है 3000 का अकाउंट. 3000 बनाओ फिर आप बनाओ 4100, तो 7100 के बाद वो आपको 1500 देते हैं. राइट. सो it is every company with 2 stages has a different scenario in terms of only Perdia has 1 stage. It is expensive because what they want is $450 is the account. 450. मैं पर्डिया में जाके सेल देखता हूँ, शायद आ गई है. देखिए जरा, एक जरा जाइएगा सुपर एरियाज का कोड देखते हैं पर्डिया में अगर कोई सेल आई हो. लॉग इन करें, स्टार्ट अ न्यू अकाउंट. नीचे वाला है 100,000 वाले पे क्लिक करें, यहाँ डालें जरा सुपर एरियाज. नीचे आने तो एक्सपेक्टेड लो, नहीं 749. So they charge you 450. There's no 2 stages. How much account balance they put in? 25,000. How much they want? They give you 1,500. How much do they want? 27,000 and 0. This is per dia, but the cost is 450. तो बेसिकली जो अपने पहला दोस्तों बताया था वो पॉइंट पर दिया वो लिखा हुआ है. टेक प्रॉफिट मेक्स सेंस, मोर सेंस. मेरे हिसाब तो सारी सेम है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टेक प्रॉफिट वाला क्या कह रहा है? वो कह रहा है यार मैं आपको 105 मुझे दो, मैं आपको दोनों स्टेजेस कंबाइन कर देता हूँ. ठीक. आप लोगों ने G1 लिया सारों ने, आपकी G2 की फीस पहली दफा ले लेते हैं ना, हालांकि 2 साल बाद आप जाके G2 देते हो. आपसे फटाफट ले लेते हैं कि G1 के भी दो और G2 के भी पैसे दो, रोड टेस्ट के पैसे ले लेते हैं. इन्होंने आपसे यही काम किया, आपसे जाके G1 के भी ले लिए, G2 के भी ले लिए. अगर आप G1 फेल करोगे तो आपका उनको तो मुफ्त में पैसे आ जाएंगे, फिर आप 105 दोगे ना. तो वो ये सोच रहे हैं कि मेजोरिटी विल, सिर्फ उनकी ग्रीड है ना कि लोग ग्रीडी हैं कि यार मुझे अगला पैसा ना पे करना पड़े. और कितने पास कर रहे हैं मुझे नहीं पता कि उनकी स्टेटिस्टिक क्या है, पर फॉर देम टू मीनिंग इसका ये मतलब है कि ज्यादा लोग 105 फेल करेंगे, क्योंकि जिसने 33 में पास नहीं करना उसने 105 में भी पास नहीं करना. राइट. तो एक
polish your skill first, हाँ, I guess. तो जस्ट बिकॉज आपको पीए का फीस नहीं है, इसका ये मतलब नहीं आप अच्छे ट्रेडर हो। ये मीनिंग कि सिर्फ आपको एक है यार मैंने एक होगा ये 105 है ना, कि यार आगे की फीस नहीं देनी पड़ेगी, वो भी अकाउंट जाएगा, वो उसी तरह जाएगा जिस तरह आपका $33 वाला है। पर फिर टर्म एंड कंडीशन पूरी चेंज हो जाती है। वो राउंड 2 में चेंज होती है, राउंड 2 में चेंज। जो लोग 40 अकाउंट्स इकट्ठे चला रहे हैं, हाँ, तो उनमें ऐसा क्या खास है? या 40 अकाउंट्स मैं जो मतलब उसमें how they माइच ओ मैं आपको बताऊं, देखिए नो प्रॉब्लम, After 5 years. नहीं 6-8 माह बाद ना आपकी एंट्रीज इसका कोई नुकसान नहीं आपकी, देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपके पास 20 एपेक्स है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, लेजेंड्स अलाउ करता है 10, पर डे अलाउ करता है 1, उसके बाद बुल नॉक्स अलाउ करता है 3, टेक प्रॉफिट अलाउ करता है 5। अब मैं 2 कंपनियां और भी डालूंगा क्योंकि आप इस स्टेज पे आ रहे हैं, आप 2 कंपनियां और खरीद करें। हाँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ट्रेड 5 आप करते हैं 7 या 5 अकाउंट, 20, 30 और ये आ गए 40, आपके पास 45 अकाउंट है, ठीक है। आपकी एंट्री इतनी फाइन हो चुकी है कि अब आपको, आप कहते हो यार कि आपने सिर्फ $20 से $30 लेने, कहां से ट्रेड हो रहा है, ये नहीं है आप 20-20 पॉइंट ले रहे हो, 30-30 पॉइंट ले रहे हो। आप लेट्स से आज MNQ आता, उन्होंने MNQ पकड़ा ना, MES MNQ, आपके पास अगर $50 आए, अब मुझे सिर्फ ये ऑनेस्टली बताइएगा 50 क्या मुश्किल है MES से या MNQ से? 50 तो मूव हो जाता है यार, 2 पॉइंट की बात है MES में, अगर आप 5 MES लें 2 पॉइंट मूव करें, लेकिन अब 50 times 40, this is where most people are over there. They're not after a lot of money, they're after very little money, but इतनी ज्यादा उन्होंने किए। लेकिन याद रखेंगे ये सारे कॉस्टली हैं। 20 एपेक्स आपको तकरीबन $1000 पड़ जाएगा, तो ये इसकी कॉस्ट, मतलब माइंडसेट की वजह से मैं बार-बार फेल हो रही हूँ। हाँ ये माइंडसेट नहीं ये नहीं है, ये यहां नहीं पहुंचना, ये उस वक्त होता है जब आपके पास 3, 4, 5 पे आउट आ जाए और आपको पता है कि मेरी एंट्रीज ठीक है, क्योंकि यहां अगर खराब हुआ ना काम तो 40-45 अकाउंट 1 सेकंड में जाएंगे। तो ये वो लोग हैं जो इतने ज्यादा काम डाउन और कूल हो जाते हैं कि उनको पता है कि हमने छोटी एंट्री लेनी है, प्रिसाइज एंट्री लेनी है। इसी वजह से मैं ये कहता हूं ये सारे मल्टी अकाउंट्स उस वक्त तक ना लें जब तक 1-2 पे आउट्स ना आ जाए यार आपको, क्योंकि एवरी डे मैं यहाँ आता हूँ, मेरे लिए तो जी from one account इतने क्यों पहुंचते? देखो हाउ टू गेट देयर, इट्स वेरी इजी। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने 10 ये उड़ाए, एक सीखते 10 ये खराब कर दी, बाय किया, एग्रेसिव ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, डोंट नो वेयर टू, 4-30 आ गया, आपने सारा एक्सपेरिमेंट लिया, मैं 10 लगा रहा हूं, $330 का यहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट हुई, ठीक है। आपने फाइनली 2 पीए भी क्लियर कर लिए, $300 लग गए, आप यहां भी फेल हो गए। मैं आपको रियलिस्टिकली हो जाता है, लोगों के पीए उड़ जाते हैं, को नारे मिलते हैं, हाँ पता नहीं क्या हुआ आज इनका पीए लेने के साथ ही पूरा पीए चला गया, नाउ इज बैक टू ये, नो प्रॉब्लम। ओ भाई पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, व्हाट डिड ही क्लिक, यस आई विल पुट इन 5 मोर अकाउंट्स, आप 5 और फेल कर जाओ, 10, 2, 12, 3, 15, ये कितने का होगा, $30 का, लस से 150 और लग गया, ठीक है। मैं आपको 2 और पीए देता हूं, 10, 15 और 19 अकाउंट आपके खराब हुए, ठीक है। बड़ा मोरल भी डाउन हो जाता है, ठीक है, हम सारे स्टूडेंट इसमें से गुजरते हैं। लेट्स से 20 अकाउंट खराब हो चुके हैं आपके,
कोई 50,000 का, कोई लाख का, कोई 3 लाख का एक्सपेरिमेंट करते करते, पर इवेंचुअली अगर आपको एक पे आउट मिल गया $1,500 का, पहले तो ये आपका सारा वाश हो जाएगा। यानी कि एक पे आउट चाहिए ना, सिर्फ एक पे आउट चाहिए उसको निकालने के लिए। यहां पहुंचने के लिए आपने 20 अकाउंट खराब किए हैं, ठीक है, और 20 को मल्टीप्लाई करें 1500 से, ट्रूली आपने $30,000 लूज किया है। अब आप ये इमेजिन करें, एक ये जाता है ना, 5 साल पीछे आए, $1,500 हाथ में पकड़े, आरपीसी में जाएं, जीएफएफ को भेजें, फिर 1500 जाया किया, फिर आप वापस आए, आरबीसी में भेजा, जीएफएफ। 30,000 कोई इस तरह नहीं जाया करता। असल में होता यह कि क्योंकि अकाउंट की वैल्यू ही सिर्फ $30 है, तो आपको फीलिंग नहीं आती, फीलिंग नहीं आ रही ना रियल मनी की, कि यार सिर्फ $30 ही तो है। मैं इधर कह रहे हैं कि आप 20 अकाउंट उड़ाए हो ना 1500 वाले, और 30,000 आपके खराब हुए हो, मेरा ख्याल है कि nobody will trade again. Like, you know, so we are in a blessed environment to learn कि कहां से मेरी एंट्री ठीक हो रही है। यार मैं ब्लैक कैंडल देख रहा हूं, मैं एरिया देख रहा हूं, मैं रिट्रेसमेंट डाइवर्जेंस देख रहा हूं। 4 दिन जो पीछे हुआ ना, मैं खुद फ्रस्ट्रेटेड हूं। मैं क्या, कल तो मैंने बंद ही कर दिया, कल चार्ट नहीं चले, कल वो स्पाइक में मेरा एक स्टॉप लॉस ऑटो हिट हो गया, क्योंकि पता नहीं कैसे वो सुबह मॉर्निंग में भी खुद ट्रेड हो गया, इवनिंग में भी खुद हो गया। सो आई वेंट होम विद -$40, कल जीरो ट्रेड था। आज क्या हुआ, आया हूं, नैस्डैक मिस हो गई 18,350। इट्स ओके। और आई एम ट्राइंग टू से कि ये जितना एक्सपेरिमेंट है ना, आपको सिर्फ सही करने के लिए। मैं अब लेकिन अब ये ना हो कि आप $10,000 लगा दो सिर्फ सीखते सीखते। 5, 6, 7, 8, 10, 12 के बाद ना आप देख लेंगे यार मेरी एंट्री क्या है, मुझे मिड बैंड लेना है। मैंने कल वाली जो वीडियो लगाई है वो आपकी रिट्रेसमेंट डाइवर्जेंस वाली, अगर मार्केट नॉर्मल चले ना, वो आपको 2 से 3 पॉइंट रोज दे रही है कि इवन आज भी वी आर काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट टुडे कि आज एरिया मिस हो गया। सुबह ES 30-20 पे लगाया था, लेकिन प्राइस कितनी आ गई है जी सर, 100 पॉइंट आ गई, 100 पॉइंट गिर गई वहां से, राइट। सो इट्स ओके, स्टिल मिड बैंड्स आर वर्किंग टुडे। यहां से भी चला, यहां से भी चला। वो होता ये कि हम, मेरी साइकोलॉजी मैंने ये देखी है, स्टूडेंट क्या करता है हमारे पास, वो एक दिन जिस दिन हाई न्यूज थी ना, उस दिन मिड बैंड लग गए तो मिड बैंड फेल हो गए, ये होता है। उन्होंने स्ट्रेटजी स्विच की, वहां रिट्रेसमेंट डाइवर्जेंस भी फेल हो गई, थोड़ी सी स्ट्रेटजी और स्विच की, वहां एरिया भी फेल हो गया। आप कहते हो यार ये तो कुछ भी नहीं चल रहा, फिर आप 6, 7, 8, 10 चीजें एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। एवरीडे मैं आता हूं, ठीक है, कल अगर एरिया नहीं लगा, आज फिर एरिया करना है, फिर एरिया करना है, फिर एरिया। इस तरह तो नहीं है कि 10 के 10 दिन एरिया नहीं चलेंगे, एक आध दिन, उस दिन स्टॉप लॉस लगा, रात को रिकवर कर लिया, अगले दिन मैं फिर एरिया पे आ गया। तो मेरी स्ट्रेटेजी मॉर्निंग में आके होती है यार कहां से बाय एंड सेल करना। नंबर 2, मार्केट्स आज मिड बैंड चल रहे हैं ना, 1 मिड बैंड, 2 मिड बैंड तो यहां से देख ली। सो आपको सारों को मैंने बता दिया, सबसे फास्टेस्ट इजीएस्ट ट्रेड रिट्रेसमेंट डाइवर्जेंस का है। आप स्विंग में या एक्सटेंशन के अंदर टॉप ऑफ द बार से सेल करते जाएं और 3.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएं। लेट मी पुट इट इन अ 30-20 जोन। वेयर इज द 30-20? आज देखते हैं कितने। एक दफा एक्सप्लेन करते हैं ये। अच्छा, नो प्रॉब्लम। ये है जी आपका, आ जाए। सो and if you fail any stage 2, you gotta go start stage 1 again. Just saying, for every company. Okay, this is our MES. Okay, where would be my trade? At the bottom of this buy limit.
पिक हुआ, मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, अभी तक तो नहीं हुआ। There you go, stop loss करें 8.5 पे। That's it, keep playing with. Yeah, black candle. आजकल तो इतना नीचे आके फिर ऊपर भागती है। Yeah, ये अभी फिबोनाची के अंदर होगा। वो पता नहीं कब तक राइट ट्रेड हो तो आप निकल जाते हो यार। 17, 16, 26, 27 बनते हैं यार, जिधर से ट्रेड डालें बनते हैं। मेरी सारा यस सर, बिल्कुल सही नहीं, कहा। नहीं, सही ट्रेड में आपने ना पूरे कैसे पॉसिबल है? नहीं सर, बट एक्चुअली मैं आज यही उठाए बॉटम ऑफ द बार वो आपका नीचे देखते हुए, और वो मार्केट का है तो स्विंग बहुत ज्यादा था कि वो बार-बार वो गोल गोइंग अभी ठीक। गोइंग लेकिन कितना स्टॉप लॉस? 3.5 पॉइंट। 3.5 ठीक है। और 3.5 पॉइंट ऑलमोस्ट अराउंड आपका $500 हो गया ना। क्योंकि लेकिन ये सबसे लोएस्ट है बॉटम ऑफ द बार 30-20, ये 15-10 में नहीं। 15-10 में 1.7 30-20 नो 15-20 नो 15-20 ओके। लेट्स सी, जहां से अगर लग चगी तो लेट्स सी। मैं अगेंस्ट द ट्रेंड जाता हूं, देखते हैं। वो भी चल रही है। नहीं नहीं, दूसरा लोअर हाई है ना। रिजेक्शन विक देखिए, नजर आ जाती है ना कुछ चीजें। देखिए अगेंस्ट द ट्रेंड डाला हुआ है, सिर्फ इस वजह से अगर ये रिजेक्शन विक हुई तो ये काफी नीचे जाएगी। अब ये ट्रेड में आपके एनबीटी पे नहीं डाल सकता, पता क्यों? आप पूछोगे ये ट्रेड क्यों डाला है भाई? क्योंकि बैकग्राउंड ग्रीन है, सब कुछ ग्रीन है, ट्रेड क्यों डाला? मैं आपको क्या बताऊं, मैंने सिर्फ ये रिजेक्शन विक देखी थी, और सिर्फ उससे भी कि उसने 2-3 दफा ऊपर जाने की कोशिश की। और पर अगेन मैं 4 साल से कर रहा हूँ, अब इसको आ गया, जीरो आ गया। एनीवे तो अब यहाँ से आपको बाय आस्क होना चाहिए। लेट्स सी इफ दिस इज अ रिजेक्शन विक, या बाय जाएगी, बिल्कुल जाएगी। अब इसको ब्रेकआउट को तोड़ दिया, हायर हाई डाइवर्जेंस आएगी, लाइन बनाते ही सेल करूंगा। अब ये आपका SRE का सेटअप बन रहा है ना, राइट? तो आप ठीक है, है डाइवर्जेंस के बाद रिस्की है। एक चार ट्रेड लाइव डाले हैं, सिर्फ वो फीलिंग आ जाती है कि आपको कहां से आपने ब्रेकआउट लिया। सो रिट्रेसमेंट डाइवर्जेंस सर ये है कि आप अपना ऑर्डर 30-20 में बॉटम ऑफ द बार लगाते हैं, bottom of the bar in a slow smooth market. You have bottom of the bar order. So if I wanted to place a trade now, bottom of the bar would be my trade right now. So I went at the bottom of the bar, got picked up. Two things will happen: will hit your stop loss, or it will go back up. So I'm holding the trade until the mid band, but if it changes color, then I'm getting out. See, one more. I'm not holding a losing trade. If it changes color, I am getting out. Close the trade. So bottom of the bar is your entry, but the first reversal, bottom of the bar, it's the highest probability. अब यहाँ से ये है, अब मैंने अगर sell करना है, let me see, will this be a rejection wick? If I want to sell here, I'll do a sell stop here, because that would be my
rejection with confirmation कि नीचे आ रही है ना तो जाते हुए मुझे साथ ले जाओ. Breakout इसको कहते हैं. So it's a breakout from a 15-10. So if this is a rejection wick, it will pick me up, give me a couple of points. Let's see. So didn't continue. Let's see. But this is a the higher the rejection wick, the lower I have. This would be my stop loss somewhere around here. Buy stop, because if it has a slow, easy to use market, 30-20, bottom of the bar, no issues. Hey, 15-10 तो देख ही रही है ना, सिर्फ 30-20. नहीं यार, मैं retrace में नहीं लेता. Either swing or extension, not in a retrace. Because right now it's a higher high, higher low, it's a retrace. So I'm not taking inside a retrace. नीचे आई तो सीधा हो जाएगा. दे रहा है तो दे रहा है. It's okay. अब यहाँ से. So this would be your, now we are inside it, this would be your order right here, sell limit. Top of the bar. Come on, pick it up. Pick it up. Let's see how many. And my stop loss would be, I'll put it around here, buy stop. Stop loss got hit. And I do highly recommend that, please, Daniel does offer one-on-one to new students. So go, once he's back, schedule some time and sit down, right, for 1 hour, 30 minutes, especially these next Monday, right? So, and you're like, I'm struggling with certain concepts, certain strategies, still having. So, of course, that's part of his our commitment too, that anybody in this office can sit down with him
and learned that it's not a problem. So क्वेश्चन है मेरे ट्रेडर वाइड में अकाउंट सारे डिसअपीयर हो गए। हॉटस्पॉट से लॉगिन करें। नहीं कोई और मसला है। मुझे क्लिक किया था मैंने yesterday। अच्छा वो प्लस है, वो प्लस और अकाउंट को ड्रैग करें। अकाउंट की मुझे नजर ही नहीं। अच्छा नीचे है। ओके थैंक यू। यानी मैं कर चेक करिएगा मैंने कौन सा अकाउंट खोला, कौन सा अकाउंट एक्टिव है, कौन सा अकाउंट डीएक्टिवेट है। एक्सपेक्टेड आई लिया नास्डैक, वेरी गुड। ईएस मेरा नहीं रहा, मैं तो टॉप ओनली बार बॉटम ओनली बार से 2000 रिकवर किए सब। ठीक। कितनी नीचे वापस आ गई?
हाँ जी मेरा माउस दूसरा खोल दिया अब इसकी RSI जो है 0.415 हाँ हाँ लेकिन नैस्डैक का एरिया देखिए पहले इसकी RSI जिधर मर्जी जाए नैस्डैक का एरिया if we do plus 8.5 over here, opposite rate, because it has to release the pressure. लेकिन वो मिड बैंड टच करके वापस जा सकती है और डाइवर्जन बना के जा सकती अब यहाँ अपना अकाउंट बनाना शुरू करना है जब हमने कल वीडियो डाली स्टोरेज डाला ये पहले मेरे पर you guys look alike He's in there right नहीं मैं उधर ही उनके साथ ही बैठा था तो बाद में पता चला कि वो आपके पास है मिस हो गया अभी देख रहा हूँ अगर एरिया कोई आए तो R1 टेस्ट हुआ वो भी नहीं लिया मैंने दैट गॉट मिस्ड और इधर भी R1 से थोड़ा सा करीब ही आ गए डोजी बनी है एम्प्टी है कैंडल 240 चार्ट ओके हाँ जी अच्छा मैंने ये किया ना तो मेरा अकाउंट से निकल गया यस यस मैंने हल्कने से वापस अकाउंट डलवा लिया सर आपने अपनी एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कौन सा ट्रेडोवेट वाला ट्रेडोवेट में लॉगिन करें तो वहाँ एग्रीमेंट साइन किए चलें अभी मैं अभी देख लेता हूँ सिर्फ या एनी टेस्ट दे दें ट्रेडोवेट सिर्फ साइन इन कर लें ट्रेडोवेट की वेबसाइट ये अकाउंट जो मैंने ब्लो कर दिया बैक टू ही है ये तो मैंने खोल दिया अब जो ये अकाउंट है उसको कुछ नहीं नहीं कुछ भी कैंसिल कर दिया नहीं नहीं जो पिछला ये था वो उन्होंने कैंसिल किया आपका अब नया है ये अकाउंट मैंने ब्लो कराया हाँ वो खुद ही कैंसिल हो जाएगा शाम को उसका कोई ताल्लुक नहीं
जब एक्सपीरियंस आ गई Costly. कि मेरे को लगा उसको वही हुआ कि वो मेरा किताब पे लग गया तो क्या है तो लॉस इज लॉस थोड़े आप मेरे हिसाब से जल्दी चीज कर गए फॉरन के मेरी बात ये हम बोलते हैं उसमें जरूर बात तो फिर जो भी करना कल देखें फिर हाँ जी कल ताकि आपके सारे जो होंगे अकाउंट्स वो फ्रेश हो जाएंगे ठीक है तो मतलब कि आज कुछ ना करें यस But yeah, it came down, shot up, dragged my stop loss, breaking down. Five, 10, 11, 10. The table. When it came down, it went up. When it went up, it pushed my stop loss to break even and it got down again. Yeah. So my trading phase is also अभी 2 बार डायवर्जन बना चुकी है ऑलरेडी सर सेटअप आ रहा है ना मैं देखता हूँ ये जी सर You can use legends and take profit both at the same same time no problem absolutely R1 R2 के दरमियान है I'm not going anywhere not taking nothing so I missed R3 then I missed R1 because of any risk कौन सा साइज आपको 50-25 एक में 1500 बनाने हैं एक में 3000 एक में 1500 माइनस जा सकते हैं एक में 2000 बेटर
Anybody wants to take area? Take at least S2. S2. Sorry, expected low. Nasdaq 17,212. That's the number I'm saying. 17,212 for Nasdaq, expected low. And for ES, I'm looking at 5040. Give me 1 second. Sorry, slightly earlier. हाँ जाने दे, अभी गिर जाएगी जब भी गिरे, लेकिन एरिया 17,210 तक लीजिएगा. Why, what happened? सेटअप ले लिया था. मैंने अभी कहा था सेटअप नहीं. 6 स्टॉप लॉस हट रहा है थोड़ी देर से. अब 188 नेगेटिव है, तो मैं क्लोज कर रहा हूं. एक दफा फिर कार्ड डालिएगा. Hello, sir. It's not. What is the see if you already made profile, it was like it means it was like 25,000 and यार ये कितना चार्ज हो जाता है? 33 I know. 50 पाउंड चार्ज हो जाता है. लेकिन पूरा थ्रेशोल्ड था, सब कुछ परफेक्ट. नहीं less than 25,000 था. Still less than 25,000. Okay. But duration कितना बढ़ गया? किसमें कर रहे हो? Yes. And one is micro. ट्राई करो पहले भी 40% ट्रेड सही हो गई. दुआ करता हूँ ना लेने के लिए. हाँ मैं ये दुआ करता हूँ ना कोशिश ही करो ना लेने की. ना लेने के लिए. आस्था तो हो जाए. I talked to so they said talk about say once you know the Today 6 stop losses, almost 6 stop losses got hit. My each stop loss is less than $20. Yeah, plus. other stop this one. The first stop loss got hit. I just instrument will use it. My mistake, I went through ES, not an ES. ES के stop loss पर stop loss. If you
easy start it up. एक्चुअली उसने एक आइडिया दिया था तो मैंने वो कर लिया वो कर दिया And then have it yes. वरना मैं उड़ जाऊँ आप No matter. So 2000 का stop loss फिर हमने 3000 का छोटे वाले तो उड़ाते ही रहते हैं हम सुबह खाते हैं शाम को उड़ा देते हैं तो एटलीस्ट दिस इज स्टिल बेयरेबल वो भी मेरा ट्रैक अभी तक ठीक है टुडे डे नंबर 3 डे नंबर 1 में minus 190 again 1087 day number 3 that is 188 but अभी 188 तो आज 188 which is fine I can still recover it if I want to. I'm just market is see 90% of the market if it's going down there is pushing up and then coming down overall stop loss अगर मैं माइक्रो में करता हूँ उसमें 50 ऐसे होता है minus 1.25 plus 1.25 ट्रेडिंग भी चली गई तो 50 आ रहे हैं देखो ये ब्रेक थ्रू है लेकिन ये जो ब्रेक थ्रू हो रहा है ना यहाँ गई यहाँ से नीचे आई मैंने यहाँ पे ऑपोजिट ट्रेड्स भी 30 मैंने यहाँ ऑपोजिट ट्रेड्स की कैसे कवर कैसे की वो ऐसे की है कि सी इट मेड अ कैंडल इट वेंट टू द नेक्स्ट कैंडल नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल में पूरा नीचे आई सो व्हाट आई डिड वाज मैं यहाँ पे हेज में ना क्योंकि कैंडल को थोड़ी स्लो है पूरी शुरू हो गई कम हो गई मैं यहाँ से लॉन्ग कर रहा हूँ अगेंस्ट द ट्रेंड मैंने लॉन्ग किया यहाँ से उतर गई $100 लिए बाहर $50 लिए बाहर वो करते करते मैंने रिकवर किया देखो इसके अगर अगेंस्ट गई क्योंकि स्लो हुई थोड़ी इसके अगर अगेंस्ट गई तो 12.50 या 32 $50 मैक्सिमम का लॉस 50 का लॉस का फिर ऊपर चले जाते हैं निकलने का मौका नहीं बस वही कर रहा हूँ मैं नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा I want to be day trader not a swing trader position मैंने आज सुबह जो कल आपको दिखाया था प्लस किसने 18 19 20 कॉल हो गया यहाँ तक ठीक है वो माइक्रो हो गया 1 माइक्रो इसका उसको डिलीट कर स्टॉप लॉस 40 so it went against me almost 20 points went back what पहली बार EST खोला छोटा EST नहीं ऊपर कलर टॉप राइट में सिर्फ कलर डाटा ट्रेड चल रहा है तो ट्रेड के पढ़ने जा रहा है ये देखिए यार सीक्रेट ट्रेडर ये जो डाउन हुआ है ना इसका ये डाउन हुआ ये so what I'm now trying to capture is कोई भी रेस आती उसके बॉटम से
एक प्रॉफिट का पेंडिंग है SAAS शेयर सुबह नहीं अभी आ जाएगा, रिफ्रेश करें, ये देखें, ऑल शी हैज टू डू इज जस्ट गो इनटू, ये आ गया, ये सिर्फ इनमें अपना ट्रेडोवेट में लॉग इन करना है। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर अब ये ट्रेडोवेट का यूजर नेम पासवर्ड है। अगर हम यहाँ ये तो आप व्हाट्सएप करेंगे एनी डेस्क, मुझे व्हाट्सएप एनी डेस्क करें, मैं आपको आता है कर दूंगा सर। क्या नंबर है? 1625 यस कर लें। किधर गई जी प्राइस? कल पीए भी चला जाएगा, पिछला ये भी चला जाएगा, कल सुबह आपको एक अकाउंट नजर आएगा जो आज लिया, यही है, नो प्रॉब्लम। कल मॉर्निंग में इधर अब थोड़ा सा मेरे हिसाब से रश कर गए। एक तो रश कर गया, दूसरा क्या मैं चला गया उसमें एटीएम सर्विस नहीं लगी, तो वो ले आओ और बस क्लोज कर रहा था, क्लोज कर रहा था, तेरे पे से क्लोज करने की कोशिश करी, तो बाकी क्या चीज हो गई, अरे जो हो गया उसको चेंज कर ही सकते हैं। यहाँ से लेने की कोशिश करो ताकि वो नीचे आए और फिर इससे फिर ये आपका बड़ी चीज है, ये वो आपका प्रॉफिट टेक प्रॉफिट। तो अगर आप यहाँ से लेते हैं 5 to 0 और यहाँ तक 5 to 0 को 4 साल ये आपका ट्रेडोवेट है, यहाँ से आपने पहले ट्रेडोवेट खोलना है, बाद में निंजा, कि अगर निंजा खराब हो तो आपके ट्रेड यहाँ से बंद हो सके। What happened is actually I'm going to change because it's so tight. ये आ गया सर, बाय है एक्सपेक्टेड लो, क्योंकि मुझे 17,210 नंबर बाय लग रहा है नैस्डैक। हाँ जी, मैं एग्जिट करेंगे।
अब आप करेंगे तो ठीक हो जाए। ऑलमोस्ट 450 पॉइंट थल्ले भी जाएगी 350 थी 200 वाली। मुझे एक बात बताओ कुछ भी हो चली जाएगी हो सकता है आपके लिए है ऐसा बिल्कुल ना अपने पास में आए ना ये समय आपके लिए बॉटम अच्छा मॉडल से ही टॉप से टॉप ऑफ मॉडल ये का वो बात नहीं करेंगे क्रेडिट होने के तमाम बात आ गया मैं बोल रहा हूँ सबमिट कर Very good. Not bad. Not bad. मैं क्या चेंज करना है? अगर ये कभी हो जाए ना तो मैं आपको ऐसे डिस्कनेक्ट करके ये राइट क्लिक करें सिम पे, ठीक है? अब हो रहा 18,357. Low has been 18,247. What's the number? 17,000.
अगर चार्टिंग हो गया तो ब्रेक इवन में आ गया, उसके बाद ब्रेक इवन नहीं होगा और मार्केट जब पोजीशन ब्रेक इवन में आपका हो गया और फिर मार्केट चली गई बहुत सारी क्विक ट्रेड। ES has lost 200 points almost from 5300 to it's okay, हमें 5 पॉइंट चाहिए होते 5320 बैठा था. Now Nasdaq, I think I will get my trade in around 3 o'clock, 17,212. ये नंबर वहां से और वहां से नीचे लगाएं स्टॉप लॉस 40-45 पॉइंट, क्योंकि MNQ एक, क्योंकि if it drops below 17,200 then you have to put your stop loss there. But I think if it gets to 17,200, it will make a higher low around that number. So this is my entry that would happen tonight whenever the price gets, but I'm waiting for the price to hit 17,210 expected low. Yes, I'm waiting for expected 50s 5040. 5040. So ES number for area 5040. जी सर, एनबीटी के ग्राफ आपके एरियास के हैं ना, एरियास वाले चार्ट्स, तो क्या आपने बंद तो नहीं कर दिया? नहीं, अभी मैंने अभी नए मैं आदमी चेक करवाया मैंने। ये आपको इसमें तो नहीं है वर्क स्पेसेस? वो आज मेरा लास्ट दिन था, मैं सोचा लास्ट दिन है इसलिए मैंने कर दिया उल्टा सीधा। ये एनी डस्टे में सेटअप करता हूँ आपका, एनी डस्ट पेज में। एक सेकंड, 1301 एक्सेप्ट कर लें और बैठे मैं कर देता। Okay, I will double check. Double, triple. We are below R1 now. No, सारे चार्ट्स का है। नहीं नहीं, मेरे वो चार्ट्स आपके एरिया वाले और फ्लो बार्ट वाला कहाँ गया? बंद कर दिया? बंद नहीं करा मैंने अभी, मेरे पे चार्ट नीचे तो मैंने अभी। अच्छा, पुराने उन्होंने सब कुछ जब रिकवर किया तो वो ओके, नो प्रॉब्लम, लेट मी फिक्स दिस। रिमोट मोड, दिस इज ऑन। ये वाले हो गए, ठीक है। अब आपके एरिया चार्ट्स का है, न्यू चार्ट 30 minutes।
यहाँ अपनी यूजर नेम पासवर्ड डालें, उसके अपना एक सुपर एरियाज का। Mid. It touched our mid, high, low, and mid. हाँ जी हाँ जी। In automated ATM, I'm trying 4 ticks to break. ब्रेकआउट 4 ticks to break. यार बहुत तेज, मैं 10 टिक्स नहीं कर पा रहा, वो तो आती है, लेती है और निकल जाती है, राइट। सो बैक इनटू R1। अच्छा तो MES में 40 points का stop loss लगा हुआ है। Good pretty well. 40 points is far, man. 200 points का stop loss लगा था। 40 points is $200 नहीं, हाँ Sorry, $200. $200। MES. But it gave me $100. Nasdaq R1 से चली गई। No. मैंने उसमें इसके लगा के टॉप अप दोबारा अभी मार्केट नीचे एक भी पिक नहीं जो पिक होता है बॉलिंग से कितने बढ़िया बढ़िया गए थे वो, पास जाके 2 टिक 3 टिक से जाके वापस 2 टिक 3 टिक से जाके वापस आगे सर ठीक है, इसको मैं सेव कर दूं ताकि ऑल डन। 6:45 पे शाम को। आज नैस्डैक का लो यही है, ये कितना सुबह से किधर गई, सुबह 4 नहीं, मैं सेव कर चुका हूँ, नोट 1 नोट। ठीक है, आप एनी डेस्क दोबारा दें, मैं लॉगिन करके स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ। वन 301 ठीक है, मैं लॉगिन करता हूँ। नीचे का नीचे खोल दे।
लेकिन अगर हायर हाई बन गया तो डन। हायर हाई बन गया तो ये ब्रेकआउट ले लो। 15-10 का ब्रेकआउट ज्यादा मेरे हिसाब से 1 पॉइंट दे जाता है। 30-20 बेचारा जो है ना उसमें जैसे 8.5 तो पहले क्लाइम किया होता है ना, तो उसमें कितनी एनर्जी, इसीलिए SRES भी फिर 30-20 के बाद बॉटम ऑफ द बार आ जाए और या टॉप ऑफ द बार, क्योंकि उसमें ज्यादा probability है। लेकिन ऐसी मार्केट हो तो कुछ भी नहीं नहीं अभी तो मैं कुछ भी मतलब नहीं। आई एम वेयरिंग नियर द एरिया अराउंड द एक्सपेक्टेड लो। 15 5040 is my number, and if I was to take Nasdaq, what number am I doing? 17,870 minus 17,210. 660 divided by 5, 132, 5182 minus. Both. समझ में नहीं आ रहा कि बताइए। $17,835 minus 17,600, 5180 minus 120. Yeah, good. Okay. आपने 30-20 पे लिए 15-10 20 मिल गई। कितनी फास्ट मूव कर रही है। कितने बजे कब लिए थे ट्रेड? 11 दिन पहले। So, कौन से अकाउंट? लास्ट वाला था डिलीट कर दिया। 687. S1 now, almost S1. ES is in S1, and Nasdaq has 4 to go to S1. 1, 2, 3 candles. 7. हमारा बाय एरिया कौन सा बनता The expected low अगर आप 5040 अगर ज्यादा पॉइंट लेने,
That will put it in Nasdaq around 17,212. ठीक है, आपने बाय लिया 28 पे निकले 2 पॉइंट यहाँ लिए, यहाँ ठीक था, कोई ट्रेड मसला नहीं था। यहाँ बाय लिया 28 पे, थोड़ा ऊपर, बहुत ऊपर ले लिया, लेकिन फिर भी 2 पॉइंट ले लिए, ये ट्रेड तो ठीक था। ये मैंने देखना है कि आपने कहाँ से ट्रेड लिया पीछे। यहाँ सेल लिया और यहाँ एग्जिट लिया, ये भी ठीक था, दूसरा ट्रेड था। यहाँ बाय लिया, यहाँ सेल लिया, ये भी ठीक था। तो ये आपका 30 पे लिया, अब बहुत नंबर क्या है? आपने लिया 35। अब चलती गाड़ी में क्यों बैठ रहे हैं, टॉप से क्यों ले रहे हैं? देखिए बॉटम ऑफ द बार से लेना है ना, यहाँ पर आपने लिया है 30, बिल्कुल टॉप से 35 से, फिर भी ये ट्रेड 1 पॉइंट लेके बाहर आ गए। ये भी आपने 28 से लिया, 28 बनता है यहाँ पर, बिल्कुल टॉप से लिया और यहाँ निकल गए। ये भी टॉप से लिया, तो जो लॉजिक है वो बॉटम ऑफ द बार से है। ये आप बिल्कुल कैंडल ऊपर जा रही है, ले जा रहे हैं। एनीवे, सेल कहाँ से लिया? 23 से और निकल, ये 3 ट्रेड सक्सेसफुल थे। एंट्री थोड़ी अर्ली लेट थी लेकिन सक्सेस। यहाँ से सेल लिया 18 से, अगेन आपने बस चलती गाड़ी में बैठ गए कि भाई कैंडल नीचे शुरू हो रही है, और तो इसको इस ट्रेड को निकले क्यों नहीं? यहाँ सेल ले लिया था 58 18 पे, 18 पे आपने सेल लिया, तो इसका एग्जिट कहाँ है? इस ट्रेड को क्लोज ही नहीं किया आपने। हाँ, इस ट्रेड को आपने बंद ही नहीं किया, प्रॉफिटेबल ट्रेड था तो वो डन, सारा आपका स्टॉप लॉस लेके निकल गया। ट्रेड की एंट्री ठीक थी, आपने ट्रेड बंद ही नहीं किया। अगर आपने 18 पे एंटर कर गए थे तो उसके बाद आपने उसको ट्रेड को देखा ही नहीं। ये देखें, अगर इस कैंडल को हम जाके देखें कहाँ से आपने ट्रेड, ये ट्रेड ठीक का, आपने यहाँ कैंडल के टॉप से लिया, लेकिन फिर भी 1 पॉइंट निकाल लिया। ये भी आपने लिया, कैंडल के टॉप से लिया, 1 पॉइंट निकाल लिया। तीनों ट्रेड ठीक थे लेकिन अर्ली हो गए, बॉटम से लेना होता है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो ट्रेड मुझे नजर आ रहा है, आपने यहाँ से सेल डाला 58, बिल्कुल सही था, सेल ही बनता है, उधर भी बाय एंड बाय बनते हैं। लेकिन इस ट्रेड को ये आपको इसने प्रॉफिट अच्छा खासा दिया, ऑलमोस्ट 18 पॉइंट का, लेकिन आपने इस ट्रेड से निकले क्यों नहीं? इसका एग्जिट कहाँ है? 58 सेल आपने किया, क्लोज नहीं बता रहा, ये क्लोज आपने कहाँ किया है? एग्जीक्यूशन, आखिरी ट्रेड 58, ये देखें, इसके बाद आपने एंट्री को ली ही नहीं, 47। अच्छा, वो एग्जिट था, एंट्री नहीं थी। आपने एंट्री ली थी 50, बाय में की थी, स्टार्ट एंट्री बाय में की थी 52.29 से, यहाँ से बाय कर लिया था, और जब वो गिर गई तो आपका थ्रेशोल्ड। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ बाय क्यों बना है? मेरा क्वेश्चन, बैकग्राउंड कलर बेरिश है, सब कुछ बेरिश है, आपने बाय क्यों दबा दिया? ये लिखें 1147 पे आपने बाय लिया है 5229 पे, ठीक है, आपने यहाँ बाय लिया, लेकिन बाय तो यहाँ बनता ही नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड मैजेंटा है, सब कुछ मैजेंटा है, और आपने बाय दबाया। जब आपने बाय दबाया तो 18 पे उसने आपको बाहर निकाल दिया, क्योंकि आपने एग्जिट 18 पे किया ना, क्योंकि देखें हर चीज रेड थी, आपने बाय दबा दिया। 5229 माइनस 5218, 11 पॉइंट लिए, काउंट कौन, सिर्फ यहाँ बाय नहीं बनता। आई डोंट सी व्हाई यू हिट बाय हियर। नहीं देखें, वो तो हो जो नहीं मेरे सर, इसी वजह से मैं वो टाइम निकाल लिया, मार्किंग निकाल ली
कि आपने 1148 पे बाय दबाया हुआ है, 1148 पे मेरा चार्ट कह रहा है सेल है, तो अब सेल दबाते, पिछले 3 ट्रेड ठीक थे, बैकग्राउंड कलर के साथ गए हैं, यहाँ आपने सिर्फ देखा कैंडल ऊपर जा रही है, बाय दबा दिया और फिर वो वहां से नीचे आ गई। ये इशू है सर, आपने अगेंस्ट द ट्रेंड गए हैं 30-20 में। इसके बाद तो 11 पॉइंट बहुत पॉइंट होते हैं यार, तो ये है अगेंस्ट द ट्रेंड 30-20 में, ये है। सॉरी और सर जो हम जो SRES हम चेक करते हैं कैसे देखते हैं तो जिसमें ओके, मैं इसमें आप आसान तरीका ये है, यू कैन गो एंड सुपर एरियाज पे जाएं, लॉग इन करें, ये पूरी की पूरी जो है ना मैंने ब्रेक डाउन की हुई है इसकी, कि एक तो आप ये वीडियो जरूर देखें इसके, ये वाले, ये लिखा है स्विंग रिट्रेस एक्सटेंशन SRES, राइट, ये बताती है कि कैसे कैसे आपको नजर आता है, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई नजर आया एंड यू एंटर्ड 1 2, ये सारे सेटअप्स एक, और ये ना यहाँ डैनियल की एक वीडियो बनी है कि स्विंग रिट्रेस एक्सटेंशन कैसे चलती है। नंबर 2 आपने करना है यूट्यूब पे जाके, हम मेरी जो आखिरी वीडियो है ये लिखा है वीडियोस, ये मैंने लिखा है कि सारे मेथड्स का स्टॉप लॉस क्या है, स्टेप बाय स्टेप, अगर आपने जो भी आप ट्रेड लेंगे, एरिया लेना है, वैल्यू लेना है, सारा लेना है कि इसके स्टॉप लॉसेस, तो इसके अंदर जो सबसे फेवरेबल ट्रेड आपके है ना, वो ये है कि SRES कंफर्म हो जाए, बॉटम से ऑर्डर लगाना शुरू कर दें, दैट्स ऑल, नथिंग। सबसे बड़ा मसला तो वही हुआ कि आप अगेंस्ट द ट्रेंड गए हैं। नो प्रॉब्लम, थैंक यू, टेक केयर। मार्केट तो जैसे लगा था एकदम ट्रेंड चेंज कर देती है, तेजी फिर एकदम आई हुई है, तेजी की तरफ जा रही है, मतलब कभी ऊपर अभी नहीं, अभी वो एरिया पे जा रही है, बड़ी कैंडल्स देखे ना 60 मिनट 30 मिनट की रेड जा रही है ना, क्योंकि वो रेड जा रही है तो वो उसने गिरना, थोड़ा सा जो वो चढ़ती है वो नहीं है। मैं इस वक्त सिर्फ चीज का वेट कर रहा हूँ, आपके बॉक्सेस आ गए हैं 5050 पे, प्राइस लोअर हाई लगा है ये, और फाइनली 60 मिनट में हायर लो लगना शुरू हो गया। नहीं, अगर जहां से अगर तो दो ऑप्शन है ना, यहां से हमारा लो है 5820 जो ऑल टाइम लो गिरा है, उसको तोड़ेगी तो लोअर लो बनाएगी, लेकिन अब हमारा SRES का सेटअप 60 मिनट में बनना शुरू हो गया, 60 मिनट में एक मुझे पहला हायर लो नजर आ गया। बेसिकली मार्केट लेके ना कि बड़े चार्ट पे देख के हाँ तो confirmation ले वहाँ लें। कंफर्मेशन नीचे से लेते हैं, 60 मिनट है लगा हुआ नीचे बना, वो तो जो कौन सी कैंडल स्टिक्स बोलते हैं उसको, कैंडल स्टिक्स, हाँ वही 60 मिनट का चार्ट है। देखिए इसने अभी बनाया लोअर हाई 5305 पे, नैस्डैक ने भी लोअर हाई बना दिया आपके ऊपर, अब सिर्फ दोनों जगह पे मैं वेट कर रहा हूँ हायर लो का। अभी ये 5040 पे वेट कर रहा हूं मैं, यहां से 100 पॉइंट, सारे स्टॉक्स तो आज भी सारे हीरे से ही है ना, तो स्टेबल से हुए हैं।
So we have Fibonacci boxes sitting at 60-minute blue, and so I'm waiting for 5040. Let's see. Because price touch S1 on Nasdaq and shot back up. Exactly S1 touch किया और वापस चली गई. और इधर भी वो देखें वापस S1 से ले गए जी पूरे. देखें almost 680 से 807 यार. How fast this is moving. Where are you going to enter? So area to area. क्या वजह है? ट्रम्प को फोन करना पड़ेगा, वो बेचारा आता है और कुछ ना कुछ हो गया. हाँ S1 होगी. नहीं मैं कर रहा हूँ 212. S2 नहीं ले रहा मैं. एक्सपेक्टेड लो 212 द नंबर. पता है क्यों? पिछली जो 4 आवर की कैंडल जिसपे एरो बना हुआ है ना, उसका बॉटम 219 है, तो मैं 212 लूंगा. 210, 212, 219. अब तो S1 ऐसे भाग गई यार 680 से 780, 100 पॉइंट. तो वही स्टोरी वाला तो क्वेश्चन तो हॉटस्पॉट से कनेक्ट नहीं होता लैपटॉप तो उसका रिलीज होता है. ये आपके डेटा प्रोवाइडर पे पता लगेगा what is honestly happening there. Sorry. तो आईटी के बना कुछ मर्जी में आपसे पूछ लेते Generally should be no issues. हैं. तो पूरा दिन आज इतनी की ट्रबल गया. सर जी थैंक यू वेरी मच. Take care जी. पीए की स्ट्रेस नहीं है, कोई रश नहीं. पीए में जब अपॉर्चुनिटी आए डालिएगा. तो बोलिए नहीं किसी भी किसी को शक हो तो मेरी शक्ल देखे बिना डाले. मैंने हर चीज देखी 4 साल में ना. वर्स्ट केस सिनेरियो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. बुलनॉक्स में 10 दिन पूरे हुए बंदे के. बल्कि उससे भी बड़ी एग्जांपल देता हूँ. यहाँ हमारे भाई बैठते थे गुरविंदर जी. उन्होंने 3 लाख के अकाउंट में पूरा किया 20,000. 20 अकाउंट है. एग्रेसिव ट्रेडर 10-10 स्लॉट्स है. उन्होंने पूरा किया 7600. मैंने उनसे कहा आप सिर्फ जाके ना पे आउट का बटन दबा दें. पे आउट कितना है? $35,000. 35,000 और कितने इन्वेस्ट हुए हैं? $3,000. टाइम वर्सेस मनी वर्सेस थिंग, राइट. मैंने कहा जाके सिर्फ कर दें. कहते हैं यार मेरा थ्रेशोल्ड कम होगा 7500 से वो 3500 आ जाएगा. वो लेते लेते ले गए 10,000 रुपये. 7. मैंने कहा अभी भी जाएं ले लें, सब कुछ रेडी है. नहीं लिया. सारे अकाउंट 10,000. So I've seen it all in terms of people getting too excited, getting too nervous, getting too emotional. It's but उसको देखो मनोज को देखो. मुकेश को. yes. मुकेश को देखो ये यार. वो तो सिर्फ पता क्या, like there's 2 ways to gamble. You can go to, this is I like still better, your odds are better. You can spend $33 and you can be playing gambling for at least 10 days. $30 में मिलता है. Your true gambling है वो आपका real money है, right? So if you want to get your habit of addiction of, you can do $33. आपका ये भी मजा आता रहेगा, right? So it's unfortunate then, so because it sets you back so much. And then he right here I said 10,000 हो गया. आप हालांकि उस वक्त वो 10 डे ट्रेडिंग होती थी एपेक्स की, तो वो 8वें दिन में थे. मैंने कहा सिर्फ डॉलर का ट्रेड डालना है जाके.
नंबर ऑफ डेज है दूर है, 2 दिन है, मैं इसको 15,000 पे ले जाता हूँ। मेरा क्या बात यही हुआ ना, चलो एक टिप में कहता हूँ, चलो डजंट मैटर कि मैं एक्सपेंशन कुछ भी देता रहूँ, यस, yes. जैसे गाय इनसाइड मिठाई लेके आए हुए हैं, और मेरे साथ अंदर एक भाई बैठा है, वो मिठाई लेके आए हैं। आज उन्होंने $1,600 टेक प्रॉफिट से निकाला है, सिर्फ नैस्डैक का एरिया। वो सुबह आ जाते हैं, मैंने अपने स्टेटस पे लगाया था, वो देखते रहते हैं। उन्होंने पूछा क्या नंबर, मैंने बोल दिया 350, ठीक है। अब उनको वो कहते हैं मैं 30, 35, 40 स्टॉप का लगाता हूँ स्टॉप लॉस, जो भी नंबर होता है। ये नहीं कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एवरी डे ट्रेड करना है। अगर नंबर आया, ना आया तो ना आया। साथ फुल टाइम जॉब है, ये भी नहीं कि कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं ऑल द टाइम बाय सेल हो रहा है। आज सुबह 350 आया, उन्होंने हर 40 पॉइंट लिए हर अकाउंट से। अब 5 माइक्रो के 40 बनते हैं $200, 200 एक अकाउंट में, 200 एक अकाउंट में, 200 एक टेक प्रॉफिट में, और वो अपना कर चुके हैं पूरा डेली पे आउट से, right? So there are those type of individuals as well, right? So it all depends on your personal preference on. डेली पे आउट है, मतलब लेजेंड्स के तो लिमिटेशन नहीं, लेजेंड्स की सिर्फ कोई कंपनी नहीं देती एक्सेप्ट पर्डिया एंड टेक प्रॉफिट, दैट्स द ओनली वन डू डेली पे आउट्स। बट आप लेजेंड्स हमेशा से करते हैं, मतलब कि बिगिनर्स यार, लेजेंड्स आपको टेक प्रॉफिट आप 100 जाया करना शुरू कर देंगे ना, 1500 गया, फिर 100, 1500, कितने 100 जाया करेंगे। टेक प्रॉफिट में आपको 7 दिन डिसिप्लिन तो आ जाएगा। ठीक है जी। अब मैं बैठा हूँ खामोशी से, 5040 ऊपर वाला मिस हुआ क्योंकि वो पिछले 2-3 दिन से वो जरा अपर लिमिट, वो 97 से वापस गया, मैंने उसको 20 कर दिया। अब नहीं आया तो नहीं आया, राइट। मेजोरिटी लोग जिस तरह वो, मैंने इनके ट्रेड देखे जो यहाँ खड़े थे, मैंने, क्योंकि आई कैन गो बैक एंड सी वेयर यू आर एंटरिंग, वो कैंडल के बिल्कुल टॉप पे एंटर हो रहे हैं। उनके 3 ट्रेड तो सही गए, चौथा ट्रेड उन्होंने अगेंस्ट द ट्रेंड लिया और वहां 11 पॉइंट का लॉस ले लिया, राइट। तो बैकग्राउंड शो कर रहा है मैजेंटा, उन्होंने हिट बाय किया हुआ है, राइट। सो एटलीस्ट आपकी ये तो प्रैक्टिस होनी चाहिए दैट डू इट इन द राइट ट्रेंड, अदरवाइज एंड है नहीं। आप मुझे सिर्फ 30-20 आप खुद देख सकते हैं ना, आसान है, राइट क्लिक करें 30-20 चार्ट में या 15 जहां भी आप ट्रेड ले रहे हैं, और सिर्फ देख लें उस पे, उसको कहें ये देखें, where do you take your entry, you can go to data series, and at the bottom it says plot executions, text and marker. At the bottom it says plot executions. बड़े लोग रोते ही जब एक्टर था, है बहुत लोग रोते। हाँ, क्योंकि डैनियल तो आपको करने ही नहीं देते इसके बगैर, क्योंकि फौरन कहते हैं मुझे दिखाओ कि आपने एंट्री कहाँ से ली है। अब मैं यहाँ से सेल करूंगा तो वो मार्क हो जाएगा, वो देखें जी, वो लिखा आ गया ऊपर। अब मैंने अब नीचे जा रही है तो सेल ही दबाऊंगा ना सर, आप फिर कहते हैं पैसे बन जाते हैं, तो मैं यहाँ क्यों बाय दबाऊंगा। वो देखें 35, 40, 50, सिर्फ सेल ही दबाना उस कलर में यार जो स्पीड आ रही है। और नीचे दबाएं, नीचे सबसे है नहीं, राइट क्लिक उस चार्ट के ऊपर जाए ना, किधर चला गया वो देखिए, एक MES दबा हुआ है और पता नहीं कितने हो गए, $80 एक MES से यार। क्लोज नीचे जा रहा है, सेल दबा दें, ऊपर जाए बाय। सो ब्लैक ब्लू, ये ब्लू ब्लैक, तो तेरा ब्लू है तो ब्लैक है, वो नीचे जाए, ब्लैक का वो नीचे वो पड़ा है, क्या बनता है 15 टाइम पे तो कोई मतलब ही नहीं है, नहीं ऊपर जा रहा तो क्या ऊपर जा रहा है, कहाँ भाग रहा हो? तो
जाने दे बिल्कुल गिर लेने दे, नजरों से गिर जाए हमारी, नजर ही आ रहे हैं। देखिए अभी S2 की तरफ भाग रही है, कैंडल नीचे है तो S2 की तरफ। बॉटम ऑफ द बार, टॉप ऑफ द बार, वो स्लो मार्केट में होता है थोड़ा, वो इतनी बात ना मिड बैंड आप कर सकते हैं। मतलब वो सेम ही है, मिड बैंड ही है वो, हाँ, बेसिकली एक exactly. तरीके से तो मिड बैंड ही है वो। आजकल तो सेटअप ही नहीं चल रहा है यार। नहीं स्पीड बहुत है, स्पीड। अभी तो लगाया था यहाँ ये भी तेरा ऐसा ही इसका सेटअप चल रहा है। बैक इनटू S1, ये सर जी लोएस्ट है ना आज का 17661। नहीं 930 तो बाद, 930 तो बाद है। आपके दो बडीज नहीं आए, आपके दोनों दोस्त नहीं आए आज? अच्छा 700 पॉइंट यानी गिर गई। अभी यहाँ से S2 बड़ा दूर है जी। S2 फिर उसके बाद तो एक्सपेक्टेड लॉस, हाँ बहुत ही लॉस है। अगली कैंडल खुल गई 1 बजे वाली, सो I gotta wrap up. So expected low is on the table, guys. Even though S2 is still on the table, but expected low is. डेटा ये देखे ना, यहाँ पर प्लॉट होना है, राइट क्लिक डेटा सीरीज, बिल्कुल नीचे जाएं, वो लिखा हुआ है प्लॉट एग्जीक्यूशन, so change it to this. So in this case, if this is a rejection wick or not, no, I'll still sell. So it tells you where you have entered. देखें 3 4 7 सेल किया, पकड़ती गाड़ी $25 $26 डन। इतनी स्पीड से 100 पॉइंट मूव हो रही है। यस $5040 that should be enough to bounce back. Should be enough. Some users may consider 5074, but 74 का नंबर कहाँ है? हाँ एक लाइन जा रही है 60 मिनट में। तो आपका ईए है ना, पहले ये ईए है, अगर आप पास कर गई 1 माह में तो पीए की फीस नहीं है, और ये एंड ऑफ डे है। 5074 is ये पिछले वीक का लो है ना, 5 बजे, लास्ट वीक 5 o'clock, या सो फ्राइडे 5 o'clock। देखिए मुझे 5040 ज्यादा बेटर लग रहा है। तो ईएस के 80 मजे के लगते हैं, फौरन ही आ जाते हैं। देखिए कहाँ से चल रही है सर, 5300 से चल रही है, 5125 आ गया, 5305 minus 50
180. 187 पॉइंट ES मूव होनी शुरू हो गई है यार। Nasdaq तो फिर अल्लाह ही हाफिज। हाँ PP अभी नीचे है S2। Idea is waiting game, waiting game, waiting game. का 60 minute has a candle to the arrow नीचे का बना हुआ है ना, अभी अगर ऊपर का आएगा फिर देखेंगे कि लॉन्ग कहां से जाना है। लेकिन मुझे लगता है अगेन 5040 is a good number. 40 bottom number of expected low.